the first slip. We talk about the two fielders outside the 30-yard circle, one at deep mid-wicket and one at long on. Sohail Khan behind the stump as a wicket-keeper when we are all set for this ball number 1 of match number 9. Good ball to start off. Good ball to start off. And as we speak, the spinners are getting too much help on this wicket. Slightly shorter in length, the ball has been hit towards that fielder at long on and straight away getting off the mark with that single. So first run's already on the board for Neha Fabrics, and Imran, the big hitter, is now going to be on strike. Some power pack performance is also expected today from Imran, and his team will be expecting that. That's a good ball. It was an arm ball that came back in after pitching, and it was so close to cut. Imran, I think, was really lucky that the ball did not went through. We talk about Imran. He was severely punishing Faraz Ahmed, the skipper of Moment Seeds, last night. So I think he prefers playing against the left-arm spinners. Yeah, obviously he wasn't expecting that much turn on previous ball. Once again, gently playing it on the leg side. He ran the first one hard. There was an opportunity to come back for the second one as well, but I think they will have to be a little proactive. We have seen in this tournament the teams usually prefer hitting boundaries, and apart from that, they don't rely on those singles. Something that we did not see from Tareen Academy, because they were giving the importance to the singles and twos as well as to the boundaries that they were getting. Once again, another arm ball, the ball coming back in. He's not a big turner of the ball, that is for sure. He's going to be relying on his line and length, Mohammad Asad. He tries to cut it on point, but it went straight to the fielder. One down, it's 1 for naught. If we talk about the playing 11 of both these sides, AO Hospital consists of the captain Khalid Latif, Hannan Achakzai, who's playing tonight, Zakir Malik, Muhammad Akhtar, Salman Khan, Sohail Khan, the wicket-keeper, Khuzaima bin Tanveer, the left-arm spinner Afnan Khan, Muhammad Asad, Lal Kumar and Arif Khan. On the other hand, Neha Fabrics has Hasib Khan, Imran, Fatah Munawwar, Rizwan Talpur, Imran Sikandar, Ali Manzoor, their captain, Ehtisham Ali, Hasib Khan. Just as we expected, Khuzaima bin Tanveer is going to take the new ball alongside Muhammad Asad. We have mentioned it before as well. He was the only one who picked up the wicket last night against Tareen Academy. And Imran will face again. And Hasib Khan on the other hand supporting him. Even Khuzaima bin Tanveer has taken a fielder at first slip and a fielder which are outside the 30-yard circle are a third man and fine leg. Leading edge over the wicket-keeper's head. That just raced away to the boundary. Imran looks in a similar mood. Last night he played similar knock. He tried here to smash this ball hard, but it edged the bat and went straight on the back and cleared the boundary. Yeah, the captain Khalid Latif should not be discouraged by that shot because it was not convincing by any stretch of imagination. He was looking to go hard at it without using his feet much, and it almost carried to the wicket-keeper. As you were right, once again Imran is looking in a very dangerous mood so far. And it's important for him to provide a good start to his side yet again, but he'll have to continue. He cannot get a half century and just throw his wicket away.
Now there is a fielder at deep square leg. Fine leg has been asked to come back inside in a ring. He picks up another big shot on the onside. Over mid-on this time. I don't think he has got much better connection on that either. It's going to be a couple nevertheless. Just a punch over mid-on fielder. Look at him. Just a punch. He wanted to hit it hard, but slow outfield. And the fielder reached the ball and threw it to the bowling end. Kusama is going to bowl once again to Imran. Good bouncer. Really good bouncer. Some aggression there from the fast bowler. We all know fast bowlers do not like being hit over their head. Really good comeback this from the fast bowler. Obviously the pitch is much fresh. The ball is relatively newer, so he's obviously going to get some bounce, and it's good to see both these batters are now having a conversation out there. He does not need to lose his concentration here, Imran. He knows he holds the key here for the lineup of Neha Fabrics. Good ball. Full length delivery. Imran once again looked in a hurry. He wanted to smash the ball, but in the end he decided to defend it and take a single. Batting has been a sign of worry for Neha Fabrics. In both the first games, they have been bowled out on a low score. They could only score 61 runs in their first one, and last night we saw them getting bowled out for just 101. And we clearly see we did not see any partnerships, neither in the top order nor during the middle order. Once again, just gently playing it towards third man, getting yet another single. He's going to keep the strike at the start of next over, Hasib, because after 2, it's 10 for none. Imran is once again having a conversation with Hasib on the other hand, who is going to face Asad, who is here to bowl his second over. A drone shot of Moeen Khan Academy, which is located in the DHA phase 8. And it's a production of Geo Super, Pakistan's first sports channel. The bowler is Asad, my pardon, Muhammad Asad. The batsman is asking to set the side screen. Coming down the track, hitting it straight as an arrow. It has gone flat and it has gone over the boundary ropes. This time it's Hasib on the charge. A really good shot in the end. It was not a bad delivery by Asad, because it was not that fuller in length. He came down the track, although he was not near to the pitch of the ball, but he still went with that shot in the end. Cut it at point region, but went straight to the fielder. No run here. Good ball. Inside edge and yet another single taken. It's important for AO Hospitals that they not only win this game tonight, but they win it by a big margin as well. Because even Moment Seeds have won a game so far in this tournament, and they are at the second position if you talk about the net run rate as well. Good strategy to bowl to Imran in his block hole and just keep him on his toes to score runs. If you don't get deliveries, he'll feel pressure. Once again, a good delivery.
He's bowling those arm balls against Imran. He knows that if he's going to throw a ball up, Imran might go after him. Although he has taken that fielder at long on, so he can take that risk. Asad. Once again, he tried to hit it big but didn't connect with the ball. And it's end of third over, 18 for naught. For none after 3. We just saw one big 6 in that previous over from Asad, which came from the bat of Hasib. Imran, on the other hand, I think he likes the Pacers. He was going after Khuzaima in the previous over as well. Now he has a chance of going after him yet again. Once again, Khuzaima is going to be bowling his second over, this time again with that fielder at first slip. This time it's Zakir Malik standing just right to the wicketkeeper Suhail Khan. In fine leg has been asked to come back in. Square leg at the boundary ropes. Slower one. That has gone high up in the air. Should be an easy chance. It is. It's Akhtar who has taken that catch. And a big wicket at this stage of the game for AO Hospitals. Neha Fabrics will have a huge impact of this wicket. Obviously, Imran, who scored 61 runs in previous game, but gave a straight catch at mid-on to depart. He scored 9 of 11 balls. Neha Fabrics are 18 for 1. Obviously a sigh of relief for AO Hospitals, because they must have come with a plan to tackle Imran after watching his last night's inning. He played a power pack knock last night, and this wicket is obviously a big breakthrough for AO Hospitals. Yeah, we were expecting some fireworks tonight from Imran, although he hit that boundary there in his innings, but now he has been dismissed and he has now been replaced by his skipper. It was a good change-up. It was a slower one, an off-cutter attempted by Khuzaima. He knew that Imran is going to be going after him, and yet again we saw him did not move his feet at all. He was looking to play that stand and deliver shot, just managing to sky up in the air, and a very good regulation catch, you can say, from Mohammad Akhtar. Ali Manzoor, the skipper, has come to rescue Neha Fabrics. Yeah, he was opening the batting in the previous 2 games. Unfortunately, lost his wicket in the very first over last night. He's going to be up against red hot Khuzaima bin Tanveer, who has been in the form of his life, if we talk about in this tournament. No was the call. Now these two batters, Zishan, need to just capitalize on this opportunity to just go on some taking singles and doubles and try to build some partnership here so that they come out of the pressure after first wicket. Exactly, Muzammil. Not many teams have been able to utilize the batting power play. If you talk about the 2 teams that have been leading in this tournament, Tareen Academy and Umar Associates, they have been the one who not only collect boundaries but they also relies on singles and twos. Fuller in length, he was looking to crash it on the leg side, just getting an inside edge. Lucky that he hit some part of his bat. Otherwise, it could have gone anywhere into his stumps or maybe an edge behind the stumps. Ali Manzoor just shaking hands with the on-field umpire Ale Haider. Must have been inquiring what did he have during the iftar. Meanwhile, Hasib is now back on strike. We just saw him hitting a magnificent 6 in the previous over of Asad. Good ball, really good ball this from Khuzaima. He looks pumped up, that is for sure.
खुजैमा का कॉन्फिडेंस इस वक्त ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ जितना है वो कॉन्फिडेंस. ये देख सकते हैं पिच के बीच में बॉल को टप्पा खिला रहे हैं और उसके बाद जो बाउंस उन्हें मिल रहा है उसको एंजॉय भी कर रहे हैं. और जाहिर सी बात है जिशान, जब आप पहली विकेट ले लेते हैं और बड़ी विकेट ले लेते हैं तो फिर इस तरीके का कॉन्फिडेंस तो बनता है. जी हाँ, और अब तक हमने देखा है पिच ने भी उनको काफी साथ दिया है. जब भी उन्होंने बाउंसर गिनाने की कोशिश की है तो काफी अच्छा बाउंस मिला है. और अभी पिछली गेंद भी आपने देखा, सोहेल खान जो कि विकेट कीपर हैं काफी पीछे खड़े हुए, उसके बावजूद हवा में उछल के उन्होंने बॉल कलेक्ट की. तो एक अच्छा फैसला है यहाँ पे खालिद लतीफ की तरफ से कि हुजैमा बिन तनवीर से ही कंटिन्यू करा रहे हैं नई बॉल से. हालांकि हमने पिछले मैच में देखा था वो काफी लेट लेकर आए थे हुजैमा को. एज अ कप्तान आपको जरूरी है कि आप इस बात का अंदाजा लगाएं कि कौन सा प्लेयर आपकी अच्छी फॉर्म में है और उसको किस टाइम पे बॉलिंग पे लेके आना है ताकि वो एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सके मैच में. बिल्कुल ऐसा ही है. और खालिद लतीफ़ की कैप्टनसी का एक्सपीरियंस इतना है, स्पेशली इस ग्राउंड पर खेलने का, तो फिर अगर वो इस तरीके के फैसले लेंगे ना लेंगे तो फिर कौन लेगा. एक और अच्छी गेंद सिर्फ बॉलर के पास ही खेल सके. और अब तक बहुत अच्छा ओवर करवाया, बल्कि ये ओवर का इख्तिताम हुआ 4 ओवर्स में 19 पर 1 नेहा फैब्रिक्स. Asad will continue his spell from the other end. And as we were talking about this present pair of Ali and Hasib, they need to control and have calm nerves to score some runs for Neha Fabrics here. Just 2 overs left in batting power play. Come on. It's a very important game for AO Hospitals and they know the significance of winning this game tonight. Remember, it's their last game of the group stages. Wrapped on the pads, big appeal and the finger goes up. Ali Manzoor, the captain. It's almost a carbon copy of how he got out in the previous game as well. On that night, it was a fast bowler. This time, it's a left-arm spinner. Once again, looking to move inside his crease, exposing his leg stump. That ball was so full in length. In the end, it was an easy decision for the on-field umpire. Ali scored just a run. Neha Fabrics are now 19 for 2. New batsman is walking in. Matiullah. He didn't play in the first 2 matches, Matiullah. Now he has come into bat at number 4, replacing his captain. Let's see what he has on offer. Once again, not a good start this for Neha Fabrics. Once again, they won the toss. The captain decided to bat first and they are not in a good position. Losing 2 wickets early. That's how the captain got himself out. Once again, playing across the line. He got into an awkward position because his pad came in front. He just couldn't get his bat down. And by the time it went down, it was a little too late. Once again, a very good delivery, targeting that similar area where he bowled last delivery to get Ali out. Now he's making the most of this pitch, and he's trying to bowl in his right areas to
to tackle the batters. The new batter in, it's a good opportunity to grab his wicket as well. Appeal again, but it was clearly going outside leg. यहाँ अगर हम असद के कॉन्फिडेंस की बात करें तो वो आसमानों पे होगा, क्योंकि तीसरे ही ओवर का खेल है उनका और 10 ही रन देके एक विकेट भी हासिल कर चुके हैं और उनके सामने एक नए बैटर हैं जिन्होंने अपना टूर्नामेंट का पहला मैच खेलना है, तो उन पर भी काफी प्रेशर होगा. बिल्कुल, क्रिकेट इज ऑल अबाउट प्रेशर ईशान, और यहाँ पर जिस तरीके की बॉलिंग करवा रहे हैं एओ हॉस्पिटल्स वाले, तो यकीनी तौर पर प्रेशर है. कट किया इस बॉल को पॉइंट रीजन में, लेकिन कोई रन ना ले सके. 5 ओवर्स मुकम्मल हुए हैं. नेहा फैब्रिक्स आर 19 for 2. Our sponsors for this series, and as we see Umar Associates, ड्रोन शॉट आप देख रहे हैं जियो सुपर पर, और ये वो ड्रोन है जो आपको तमाम फिजाई मनाजिर दिखा रहे. एरियल व्यू ऑफ मोइन खान स्टेडियम. और यहाँ पर इस वक्त नेहा फैब्रिक्स जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया उनको बताते चले, नेहा फैब्रिक्स वर्सेस एओ हॉस्पिटल्स का मैच इस वक्त जारी है मोइन खान क्रिकेट एकेडमी में, और अफनान खान अब बॉलिंग करवाने के लिए लाए गए हैं खालिद लतीफ की जानिब से. जी हाँ, बैटिंग पावर प्ले का आखिरी ओवर अफनान खान कराने आए हैं जो कि खुजैमा बिन तनवीर को यहाँ पे रिप्लेस कर रहे हैं जिम्नेजियम मैन से. काफी दराज कद के स्पिनर हैं और यहाँ वो भी कोशिश करेंगे कि टर्न और बाउंस हासिल करें. और वो टर्न और बाउंस, टर्न तो इतना जिशान हमें दिख नहीं रहा, लेकिन अगर आप सही एरिया पे बॉल कर रहे हैं देन यू आर जस्ट ट्रबलिंग द बैटर. Once again coming down the track, thrashing it on the outside. He has found the gap and he's going to collect yet another 4. Hasib, he was getting a little restless because all the action was happening at the other end in the previous 2 overs. He knew he had to collect a boundary. He came down the track and threaded that gap on the outside. और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा कवर पर जो फील्डर थे वो बहुत स्लो अप्रोच के साथ बॉल की जाने आए, अदरवाइज ये बॉल थोड़ा सा कोशिश की जा सकती थी मजीद इसको रोकने की. Yeah, he was looking to stop that ball while diving away towards his left, but such was the timing. This time pulled away on the onside. Once again he has found the gap, but there is protection out there in the deep. And once again I thought there was an opportunity to come back for the second one as well. Once you are watching that runs are difficult to come by, you need to convert those singles into twos whenever you have placed a ball in the gap. Good check, bache, good check. Afnan Khan has now sent the mid-on fielder towards long on, and long off has been asked to come back inside the inner ring. Sohail Khan on the other hand, very sharp behind the stumps. Very well done, boy. Pressure must be building on Matiullah. A little too high. Now he has faced 7 deliveries without scoring a run. Once again we are witnessing batting power play going in the favour of the bowling side, as they have picked up 2 wickets, but they have also kept the scoring rate down, scoring just 4 runs and over at this stage, Neha Fabrics. And once again they are having issues in the batting lineup. Faster one attempted, playing on his legs, only going to be a single. 6 runs in the opening over from Afnan. After 6, it's 25 for 2. The bird view of this wonderful DHA Sports Club Moin Khan Academy cricket ground. That is the host of this Maple Leaf HD 38 Corporate T20 Cup.
This Ramadan cricket tournament happening after a break of 3 years because of the COVID situation, and we fine, are witnessing fine, some fine. great cricketing action for the past week. Remember, 2 matches are scheduled to be played every day. We are going to be looking at the semi-finals on Friday, and the final is supposed to be played on the Saturday. So to all our viewers who are watching this telecast live on their TV screen on Geo Super, you are also invited to come here and fill in the stands and see all the cricketers in front of their eyes. Another bowling change. Asad has now been replaced by Lal Kumar, very experienced spinner. There was so much arsenal in the bowling attack. 3 left-arm spinners, 3 very qualified left-arm spinners here, Hospitals. And if required, even Akhtar can roll his arm over as well. The wicketkeeper is backing his bowler. Actively went to the ball. No run. Lal Kumar is also following the footsteps of previous 2 spinners and bowling on the right line and length to tackle Mati, who has played 11 balls and scored just a run so far. Yeah, even Lal Kumar is creating all those difficulties. They're trying their level best to at least find a gap, but the ball is just going straight in the fielder's hands. And he's bowling at a very tight line as well. Lal Kumar coming around the wicket. He's pitching the ball outside the off stump. He knows there is a big gap available on the leg side, so he's not trying to look and bowl into pads. Ball in the air, but it will safely land on mid-off region. Khalid Latif tried to hit the ball to take a chance of a run out, but Lal Kumar wasn't behind the stumps to collect the ball. He is also apologizing here. It was Zakir Malik, and there was absolutely no need of that throw. Playing upish! And that has been taken. That has been the story of Neha Fabrics batters so far in this tournament. They have been gifting wickets away to the opposition. That's just another example of it. He was trying to cut this ball over the point region fielder, but he didn't manage to take it off. Hasib Khan walks back after scoring 14. Neha Fabrics are now struggling for 26 for 3. Defensive Housing Authority Phase 8, where this ground is located, and to the left you can see some skyscrapers that are under construction. Right next to them are the beautiful Creek Vista apartments, and if you look at the batting performance of Neha Fabric so far, top 3 batters have all been dismissed. Hasib, Imran and Ali unfortunately could not make any impact with the bat. Matiullah is out there, and now he has been joined by Jalal, who once again playing his first match of the tournament. They were 18 for none after first 3 overs, Neha Fabrics, and in the next 4 they have only managed to score 8, and they have lost 3 wickets. Once again they are on the back foot. They have lost wickets early. Jalal Kareem is the new batter in. He's going to be at the non-striker's end because we saw Hasib losing his wicket in the last ball of the previous over. That's how he lost his wicket. It was there to be hit. It was wide outside the off stump. Just couldn't find the gap, and an easy catch for Afnan Khan. There was no strength behind that stroke at all. Afnan Khan is going to take those catches 10 out of 10 times. Now it's his time to bowl. Lighting it up, comfortably playing it towards long on for yet another single. And the wicketkeeper is asking fielders to not come late on the ball.
because they are already gripping on this match and they don't want to lose the grip at any moment coming up. No opportunity for a single. Afnan Khan is a very good feeler of his own bowling as well. He senses where the ball is going and he usually goes after the ball himself on his follow through. Once again, this innings of Neha Fabrics going absolutely nowhere. Someone here needs to step up for Neha Fabrics, maybe Jalal, because we saw Mati struggling. He has played 14 balls and scored just 3 runs. So there is a need of some savior knock for Neha Fabrics. Dropped him over. What a beautiful delivery that is from Afnan. It's a left armers galore this pitch in this tournament. Jalal absolutely had no answer where the ball was going. I think he's still checking for the umpire signal whether that ball hit the stumps or not, and now he has been asked to walk back. Perfect delivery from a left arm orthodox. But the credit goes to wicketkeeper here as well, because the way he picked up the line so quickly and collected the ball and didn't take much time to remove the stumps. So Jalal Kareem came and he went without scoring. It's 27 for 4. जियो सुपर पे रमजान क्रिकेट का भरपूर मजा, भरपूर एनर्जी के साथ भरपूर क्रिकेट, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट के सुपरस्टार्स सरफराज अहमद, खुशदिल शाह, शान मसूद, असद शफीक, हैदर अली, आजम खान, अनवर अली, उमर अकमल, फहीम अशरफ, साइम अयूब, मेपल लीफ एचडी पट्टी 8 कॉर्पोरेट T20 कप, पावर्ड बाय पार्क व्यू सिटी, 7 से 15 अप्रैल GH स्पोर्ट्स क्लब मोइन खान अकेडमी से बराह रास्त। सेफ जियो सुपर पे जीत के जियो। Walks in. Rizwan Talpur, his full name. He'll face Nan. Let's have a look again. And the ball just clipped the bails. Umpire went for a TV umpire to check this, but it was a bowled in the end, because the ball just clipped the bails and then went into the gloves of wicketkeeper. Just 4 bowlers have been used so far from AO Hospitals. All have picked up a wicket each. This one is a new batter in at number 6. I'll be really surprised if they will be able to bat their full 20 overs tonight, Neha Fabrics, because the way they are batting and the amount of wickets that they have lost already, it's going to be tough. Once again chipping in, and he's lucky. He's lucky that the mid-wicket fielder was very close to the pitch. Had he been standing at the edge of the ring, it would have been an easy chance for him. A successful over comes to an end from Afnan. Just 2 runs and a wicket off it in the end. It's 28 for 4 after 8. जियो सुपर पे रमजान क्रिकेट का भरपूर मजा, भरपूर एनर्जी के साथ भरपूर क्रिकेट, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट के सुपरस्टार्स सरफराज अहमद, खुशदिल शाह, शान मसूद, असद शफीक, हैदर अली, आजम खान, अनवर अली, उमर अकमल, फहीम अशरफ, साइम अयूब, मेपल लीफ एचडी पट्टी 8 कॉर्पोरेट T20 कप, पावर्ड बाय पार्क व्यू सिटी, 7 से 15 अप्रैल GH स्पोर्ट्स क्लब मोइन खान अकेडमी से बराह रास्त। सेफ जियो सुपर पे जीत के जियो। Game, and they're scoring at 3.5 runs an over. Lal Kumar is going to be bowling yet again now, his second over. He got that wicket of Hasib in the last ball of the previous over, just gave away 1 run. And I will be surprised if we are going to witness a fast bowler from here on, because the left arm spinners are dominating the proceedings so far.
as their wicketkeeper says. Brilliantly on this pitch. And a quick single will take their score to 29, but it will not harm AO Hospitals at any point because they can afford singles here. But Good check, Khalid bhai, good check. It's going to come around the wicket to the right hand, and now Lal Kumar. Koi nahi, Lalu bhai, koi nahi, Lalu bhai, koi nahi. Not happy with that single either, Lal Kumar. He did not want to concede a single there. He wanted to bowl to the right-hander. He knows if he can manage to turn the ball away from the right-hander, he can get that wicket, just like the way Afnan Khan did in the previous over as well. And once again, I think we definitely know where the match is going towards. It's going to be spinners who are going to be dominating the proceedings, as has been the case here so far from AO Hospitals. it's last delivery of this over. Lal Kumar is ready to bowl and conceded just 2 runs so far. Again dot ball to end this over. Neha Fabrics are 30 for 4 after 9 overs. Have something to defend. If they score from 8 and over, they'll reach to 118 runs. Once again, good delivery, inviting the batter to come on the front foot and drive it on the offside. Not going to be easy though, especially for Mati Allah, who is straight away walking into this side, who have already lost their first 2 games. They have a point to prove. The match is being televised obviously, so they'll be looking to make this performance count. It's a learning curve for Neha Fabrics. Easy pickings. Is guiding it past that fielder at short fine leg, and this time they will come back for the second. Lal Kumar tidying the job, throwing it back to the wicket keeper. Talking about Afnan Khan, he was a part of Pakistan Junior League as well, which was played in Lahore last year. Pakistan Junior League in fact highlighted so many youngsters and gave a platform, a high-class platform to all of them. Played it in fine leg region. Deep square leg fielder came to rescue and 2 runs were taken. Last 2 deliveries of the 10th over. Afnan is so far looking in control, bowling in right areas, and Mati is scoring with slow pace. Long off fielder will take it easily and throw it down to the bowling end. Last delivery to go. Yeah, we enter the 10th over and just 35 runs on the board. Once again hitting it straight back to the bowler. Another economical over comes to an end from Afnan. After 10, it's 35 for 4. As we were mentioning it before as well, they were 18 for none after the 3rd over, and in the next 7 they have only managed to score 17 runs for the loss of 4 wickets. Again, we are witnessing not many big partnerships from Neha Fabrics batters. I have been joined by
Danish Anis alongside me in the commentary box. Welcome back, Danish. I can smell a good cup of coffee with you. Yours is on its way, Zishan. One thing is for sure, Neha Fabrics are very consistent, consistently struggling. Almost lost another one. There was definitely some part of bat involved there from Matiullah. Otherwise, he was trapped right in front of his stumps. What amazes me about Neha Fabrics is this is their third match and they've won the toss every time and decided to bat first. At least something is going in their favor this tournament. Good delivery, really good delivery. Big appeal is from the bowler as well, but the umpire is unmoved. Might have done too much. Lal Kumar did get a lot of turn there. Halfway through their innings, they just managed 36. A big shot attempted, but there is protection out there in the deep. The ball is going to go straight towards Asad, standing there at long gone. Even when they were playing the game last night against Tareen Academy, maybe, they were easily giving away singles. They were not putting up any extra pressure on the batters during that run chase. And even now, they are just playing into the hands of the opposition. It's either dot deliveries or even if they are timing the ball well, they are going straight to the hand of the fielders. They are not doing anything extra, something out of the box. The point is they've already lost 4 wickets. They have no other choice but to consolidate here, play out the overs. Well, if they're going to play out their full overs like this, yeah, they will do definitely better than what they did in the first game. They might reach 70 or 80 runs, but we'll still have to wait for the next 9 overs to find that one out, because after 11, it's 39 for 4. AO Hospital using spinners one after the other, trying to trap them even more. Can Mati break free here? Haven't seen any intent from him yet. Yeah, it's a learning curve for him as well. Families have already joined us in the stands. They know 2 big matches are scheduled for tonight. That's another change in the bowling attack. Hanan Achakzai has now been given the ball. They have a luxury of having 4 left-arm spinners tonight, AO Hospitals. We have already seen Lal Kumar, Afnan Khan, Asad. Hanan Achakzai now bowling his first over, and if required, even Akhtar can bowl his left-arm spinners as well. Hanan playing his first match today, was brought in as a replacement for today's match. This is AO Hospital's last outing. And I think they have read the situation well as well, because they know not only they need a victory in tonight's game, but they need that by a big margin as well, because they are lying at the 3rd position at the points table behind Moment Seeds. Because Moment Seeds have also won 1 game, but they have a better net run rate. And overall, Moment Seeds have looked more impressive in comparison. If you compare AO Hospital and Moment Seeds, they've shown signs of improvement in both their matches. Yeah, the way they lost their game last night, AO Hospitals against Tareen Academy, must have hurted them, because they couldn't put up a good score on the board, and then they allowed the opposition to chase down the target inside 12 overs. When it comes to Tareen Academy, they're just too good. They do not give any margin to their opponents. Go all out.
Once again, the ball going straight towards Afnan at mid-wicket. They might collect another run on the overthrow. I was so impressed yesterday, Zishan, that I couldn't stop talking about their amazing performance. Even when I was doing the post-match ceremony, I kept praising them. I even talked to Khalid Latif about Tareen Academy's performance, not their own. Yeah, that's what happens because by putting up a good show, they are giving so much to learn for the oppositions as well. 12 done is 43 for 4. A wicket each for everyone other than Hannan. All of them giving away under 5 runs per over. But that's got to do with a defensive strategy of Neha Fabrics rather than good bowling by AO Hospitals. Yes, they've been good, they've been disciplined, but Neha Fabrics haven't shown any signs of aggression. Finally, there was some intention there, getting an inside edge. The ball has gone fine, and that will definitely go past the boundary ropes. This is what they need. They will take it, no matter how they come. Rizwan threw the kitchen sink at that. Couldn't middle it, but the inside hedge got him a 4 for sure. Sohail Khan knew it behind the stumps. He knew how close that ball was to the leg stump, and he was inviting the batter to go for that stroke. Almost fell into that trap. This is turning out to be a tailor-made situation for AO Hospitals. If they can manage to bundle Neha Fabrics under 80 runs, they can score those runs quickly and improve their net run rate, which would help them later on in the tournament. Crashed on the offside. Wheeled around there at long off. Zakir Malik is going to throw the ball back to the bowler. Yeah, it's going to be important for them to first restrict the opposition to a low score and then to chase down the target as early as possible. And for that, they will have to make few changes in the batting order, because we saw Khalid Latif last night coming into bat at number 4. He might have to come as an opener and go after the bowling from the word go. Flighting the ball this time, Lal. Just short, which allowed Rizwan to rock back and get another single. People have definitely come here to witness Azam Khan, who is going to be in action later tonight for Umar Associates. Well, I believe they're here for Khwaja Nafi as well, because he's become a viral sensation. You keep seeing his videos and highlights of his innings everywhere. Coming down the track, again not middling it. It's a long on fielder, going to cut that one off. Another single to end the over with. A better over as compared to the previous ones. 8 runs off it after 13. It's 51 for 4. If Neha Fabrics continue to play the way they are, they will just manage 78 runs. If they go 6 runs per over, they'd manage 93. That's the least that they should be looking for. Even if they can score at 10 runs an over, the score is going to be still way below par, because of the opposition they are playing against. And I was happy that you mentioned about Khwaja Nafi, and even I was scrolling through my timeline, and I was happy to see that more and more journalists and former cricketers are taking note of the innings that he has played so far in this tournament. And I was watching that few people were having objections that he's a predominantly leg side player. But we did see, we were here, we saw that how well he played on the offside as well. In fact, I uploaded a video as well in which he played that shot on the back foot, a shot that Sachin Tendulkar used to play in his prime days. Dishan, it absolutely amazes me. How can you watch highlights of a particular player's innings, which probably has 8 out of 30 shots that he played,
and determined that he is a predominantly onside player. We saw that innings live, and he played all round. The ground staff also making sure that the ground is always ready before the start of the game, and they are also enjoying the pitch alongside the chief curator of this Moin Khan Academy cricket ground. Khuzaima bin Tanveer has now been introduced into the attack yet again. Khuzaima bowling his third. Yeah, he got that big wicket of Imran in his second over. So much expectations were there from Imran, the big hitter who got a half century last night. Once again, Rizwan getting an inside edge. It has gone fine, and it's gone for yet another boundary. It's the second time that he has collected a boundary in that fashion, Rizwan. Once again, he was clearly laid onto that stroke. Khuzaima still bowling that venom, still bowling with that pace, and almost the ball hit the leg stump after getting an inside edge. Seems like Rizwan has mastered the Chinese cut. Yeah, we have seen some different strokes in this tournament being played, and Rizwan has made that shot of his own. Fuller in length. He was attempting a yorker, maybe turned out into a low full toss, but still did not go for any runs. And even if you're talking about Khwaja Nafi again, if you talk about a player being predominantly a leg side player, I can still recall one of the most successful test match captain, Graham Smith from South Africa. Initially during his playing days, he was always a leg side player. Even Nasir Hussain, former English captain, spotted that. And if you talk about Saurav Ganguly, Dada of cricket, he used to play on the offside always. Yes, but I believe, Zishan, conditions matter. On a pitch where the ball is holding up, it's not coming onto the bat, you won't find too many batsmen driving through the line of the ball. Beautiful swimming pool here at DHA Sports Club. It's the first time I'm watching it, and it looks simply stunning. It's good that we have big summers, long summers in Karachi, so that we can once take membership and make use of the swimming pool. A squash facility as well, and I think people were playing squash there today. It's a paradise for the sports lovers. Getting back to judging a player watching highlights, I believe the situation matters as well. If 22 players are playing in a certain match, and if one of them is showing a class which is miles apart, you've got to appreciate him. Once again, thrown on the offside. The ball goes straight to that fielder. Back for the point. There will definitely be a chance of a run out. He misses, but both the batters are stranded at the wicket keeper's end, and they are not even bothering to return. I think both are going to wait. It's going to be really difficult for the third umpire to see as to which batter has been dismissed. Comedy of errors. Tanish. I mean, no calling whatsoever. I'm sort of speechless here, Zishan. I was about to say that we are short of words. There was absolutely no communication whatsoever, and although that fielder at back for a point, he decided to throw at the stumps directly. He missed, and even then they did not even try coming back to the crease. Hey, see Khuzaima bin Tanveer bowling it outside the off stump. He drove it on the offside. He straight away wanted that run. I think it was Lal Kumar who threw it at the bowler's end, and he missed. And there was still an opportunity for the batter to at least try to come back. There was another fumble after that, Zishan. Both the batters were standing together, did not bother moving at all. AO Hospital players are definitely enjoying it. You can even see Khalid Latif asking them, please, at least try, come back inside the crease.
they will have to check at the wicket-keeper's end as to which batter came inside the cream. This might give us a better view. I fail to understand. I mean, he was halfway across the crease. He should have gone ahead with the run. Yeah, it was his call. He was obviously playing that shot on the front foot. Obviously, his first two steps were outside, and he could have easily completed that single because the fielder did not throw the stumps directly. And I think the batter at the non-striker's end will have to walk back because he landed his bat later on. Rizwan, who was running from the non-striker's end, Mati, after playing that stroke, came back. This will give us a much better idea. No, it won't. We might have to check it from the other angle. Here we go. This should present a clear picture. No, it won't. No, the second replay from the front on, I think it was much clear that Rizwan was the one who did not land his bat at the right time. Once Rizwan turned back halfway through the pitch, he was the first one to get inside the crease. It's Rizwan who will have to go back. There has been a struggle for both these batters. Mati playing on 17 of 33, Rizwan scoring 15 of 18. They haven't been allowed to open their arms or play freely. On the other hand, some positive changes for AO Hospitals. They included another left-arm spinner. There you see. It was Matiullah who, after playing that stroke, I think he landed his bat before Rizwan did, but it tells a completely different story from this angle. I wouldn't want to be the TV umpire here. Yeah, we were talking about changes being made by AO Hospitals. Hanan Achakzai, who recently picked up a hat-trick as well in the other Ramadan cricket tournament, which was recently concluded. It's Matiullah who will have to be sent to the pavilion. Yeah, it's Matiullah walking back to the pavilion, unfortunately being run out when the both batters were stranded at the wicket-keeper's end. He walks back after scoring 17 of 34. It's 57 for 5. Dishan, I feel for these players. I mean, you've got to blame the management if there has to be blame put on someone, because you've got to understand the talent that's on showcase in this tournament. You've got to understand the strength of other teams that are participating and bring a similar team. There are levels here. Yeah, definitely. You got to understand the magnitude of the tournament being played. Ihtisham Ali is the new batter in, and that's how Matiullah lost his wicket. He was the one who asked his partner for the run. It was Rizwan who landed his bat before.
Because if you look at the other teams, almost every team have at least one or two international cricketers who have represented Pakistan in any format of the game. So if you are building a team, at least you need to have 2 or 3 players who are involved in domestic circuit. Yeah, either they've played international cricket or we've been seeing them in the domestic circuit doing really well. So if you bring a team to a tournament which comprises of all young guns, it gets a little difficult for them. Yeah, it definitely does. And although yes, you are playing with a young side, you have faith, you have trust in your youngster, but you got to learn from the previous mistakes as well. He's pitching down the leg side again. He was looking to play that sweep shot, just couldn't time it. You have won the toss in the previous 2 occasions. You know you are struggling with your batting order. You could have tried and do something different tonight. It's your last game. Even if you lose, even if you win, you won't be able to qualify for the semi-finals. At least you could have given a chance for your bowlers to bowl their full 20 overs and then see if your batters are capable of chasing down a target. Let's not forget they made 3 changes yesterday and they made 3 changes again for today's match. So that plays a role as well. Big shot attempted down the ground. Chance for Asad. Oh, it was a wonderful effort. He was diving forwards but just couldn't judge it in the end. Just stopped before the ball reached him. I guess that made it fall short of him. He should have ran all out for it. And again, easier said than done. It's never easy to judge these. Yeah, he was looking to dive forwards and in that process just couldn't take it. Once again the ball hitting the pads, although it was collected by the wicket-keeper, but the score is going to stay that way. After 15, it's 60 for 5. जो अल्फाज से अदा हो जाए मगर आंखों से बयां ना हो तो वो फिर प्यार तो ना हुआ। इतना करीब आ जाओ कि तुम्हारी सांसें मेरी सांसों से बन जाएं, कोई दूरी ना रहे। हमारा और उनका खून जुदा था, जुदा है, जुदा रहेगा। इस दौरान कॉम बॉक्स में तब्दीली। मुझे अब फैजान लखानी ज्वाइन कर चुके हैं। फैजान, नेहा फैब्रिक्स की मुश्किलात जारी हैं बट दे हैव नो वन एल्स टू ब्लेम बट देमसेल्व्स। आज फिर टॉस जीते, वो फिर बैटिंग करने का फैसला किया। बहुत बहुत शुक्रिया दानिश, और मैं सरप्राइज नहीं हूँ 15 ओवर में 60 पे 5 आउट नेहा फैब्रिक्स के देखकर, क्योंकि पिछले 2 मैचेस से भी इनके तकरीबन ऐसे ही हालात थे। तो फिर क्यों सरप्राइज है आप? नेहा फैब्रिक्स की टीम अपोनेंट्स को ये मैनुअल स्कोर बोर्ड बता रहा है कि 60 रन पे 5 खिलाड़ी आउट। अब तक कुछ नहीं कर पाई नेहा फैब्रिक्स की टीम। अपोनेंट्स को बिल्कुल भी चैलेंज नहीं किया उन्होंने। बाहर थी लेकिन डायरेक्ट हिट तो थी, बट पहुंच गए। The batters from Neha Fabrics seem a little lost. They don't know what's happening around them. We just saw a run out before this as well. Even now, Ehtisham got the ball on his toe and started running without seeing where the ball went. Khuzaima has been exceptional till now. दानिश, पिछले मैच में भी 2 रन आउट इनके देखे थे हमने। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन बैटर्स एंड रनर। बड़ी अच्छी डायरेक्ट हिट थी और आउट है ये, क्रीज से मीलों दूर। बिल्कुल easy decision for the TV umpire there. पूरी डाइव भी मारी थी एहतशाम ने, लेकिन still fell short. बिल्कुल जहां पहुंचना था वहां नहीं पहुंच पाए, हवा में ही रहे। और मिस्टर जिम का इशारा, आउट। साठ के स्कोर पर 6 नुकसान उठाना पड़ा है नेहा फैब्रिक्स को। एहतशाम अली 1 रन बनाकर पवेलियन को वापस।
तो फैजान, थ्रू आउट द टूर्नामेंट हमने अच्छे मैचेस देखे हैं, अच्छा पोटेंशियल देखा है, खासतौर पे जिस तरह उमर एसोसिएट्स खेलती हुई हमें नजर आई है, जिस तरह कल तरीन एकेडमी ने शो ऑफ स्ट्रेंथ किया है. इट्स बिन प्रीटी गुड. और 2-3 ऐसे प्लेयर्स हैं जो ये कह लें कि फाइंड ऑफ टूर्नामेंट बन सकते हैं, और यहां से अगर उन्हें पिक करके डोमेस्टिक क्रिकेट में मौका मिला अच्छा, तो वो लॉन्गर सर्व कर सकते हैं पाकिस्तान को भी. Better energy today by AO Hospitals for sure. They look pumped up in the field, trying to save singles. Even though Neha Fabrics are on the back foot, उसके बावजूद ज़्यादा आसानी से उनको सिंगल्स बनाने दे नहीं रहे हैं AO Hospitals के प्लेयर्स. उनके लिए भी तो सर्वाइवल की जंग है यहाँ. कन्विंसिंगली जीतना चाहेंगे ताकि कंटेंशन में रहे और अगले राउंड तक क्वालिफाई करें. Neha Fabrics is definitely helping them out today. सोलहवें ओवर का खेल जारी और 60 रन पे 6 विकेटें गंवा चुके हैं नेहा फैब्रिक्स की टीम, और हम तवक्को रखते हैं कि ये देखें पिछले विकेट कैसा कि एलबीडब्ल्यू की अपील पर तो अंपायर इंप्रेस ना हो सके, लेकिन बैटर ने अपनी विकेट गंवा दी, रन आउट हो गए. एलबीडब्ल्यू ना सही, रन आउट ही सही, विकेट तो मिली. So is this going to be a maiden, Faizan? Apologies for that. अब तक 5 गेंदों पर तो एक भी रन कंसीड नहीं किया. मैं ये कह रहा था दानिश के ये स्कोर हम चाहते हैं कि पावर प्ले का स्कोर हो, लेकिन ये 16वें ओवर पे 60 रन बन रहे हैं, और वेरी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस बाय नेहा फैब्रिक्स. अभी तक वैसे किसी भी टीम ने पावर प्ले में इतने रन स्कोर नहीं किए हैं सिवाय तरीन एकेडमी के. वो स्कोर अच्छा कर रही है पावर प्ले में निस्बतन एज कंपेयर टू अदर स्क्वाड्स, अदर टीम्स. दे हैव यूटिलाइज्ड पावर प्ले बेटर देन अदर्स. Oh, maiden over. A wicket maiden for Khuzaima there. After 16, it's 61 for 6. It has been easy going for Tareen Academy till now in this tournament. I'd like to see them under pressure as well. They look like a very good unit, Faizan. लेकिन it would be interesting to see जब उनकी 2-3 विकेटें गिर जाती हैं. अभी तक उनके नंबर 3 से आगे बैट्समैन आजमाए ही नहीं गए हैं, मौका ही नहीं मिला उनको. नहीं, उनके आगे भी जो बैटिंग स्ट्रेंथ है वो बुरी नहीं है. हाँ, उनको मौका नहीं मिला अब तक, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाए, वो अलग बात है, बट बड़ा बैलेंस स्क्वाड लेकर आए हैं. और इस बार आउट होने का खतरा, लेकिन कैच ड्रॉप कर दिया. These are never easy, Faizan, but you expect them to be taken. आप इस लेवल पे एक्सपेक्ट ही करते कि इतना आसान ऐसे कैचेस आप ड्रॉप करें. मुश्किल मेरी नजर में नहीं था. But he was running in, it was low, he had to get down and try to catch it at the same time. Sohail was very excited behind the stumps. There was definitely a sound there, but no connection with the bat. Fired this one in. Hannan Achakzai ko aaj team mein shamil kiya gaya to add strength to their bowling department. It has been working till now. गेंद हवा में उठाई और एक और कैच ड्रॉप कर दिया. बहुत ही अनइम्प्रेसिव फील्डिंग इस ओवर में. 2 कैचेस ड्रॉप किए. ये वो
कमान यार लालू भाई। देखे उठा के खेलना चाहते थे, ख्वाहिश थी कि गेंद को बाउंड्री लाइन से बाहर फेंके, लेकिन फील्डर के हाथों में तो जरूर गई, लेकिन वो कैच ना थाम सके। एक बार फिर से हवा में खेला, इस बार आउट होंगे कि नहीं, यकीनी तौर पर आउट, और फाइनली अपने विकेट गंवाने में कामयाब। This time it was Zakir Malik who took a few steps back and took it above his head, managed to hold on to his nerves and took it safely. Hanan finally getting a wicket. दो मरतबा चांसेस मिले थे इस ओवर में, फिर भी अटेम्प्ट की रिजवान तालपुर ने। 18 रन बनाकर आउट हुए। 24 गेंदों का सामना किया उन्होंने, 2 चौके इनकी इनिंग्स में शामिल। एक यहाँ तालपुर से उम्मीदें बंधी होगी शायद नेहा फैब्रिक्स की टीम को, बट Right, that has been the story for Neha Fabrics till now. सिर्फ 3 ही बैट्समैन डबल फिगर्स में दाखिल हुए और वो भी ज्यादा इंप्रेस नहीं कर पाए। हसीब with 14, Mati with 17 and Rizwan who just got out on 18. Team needs it desperately. सलमान एक बार फिर निकल के खेलना चाहते थे, लेकिन सिर्फ एक ही रन मिलेगा यहाँ पे, और इसके साथ 17वें ओवर का इख्तिताम। नेहा फैब्रिक्स का स्कोर 63 रन, 7 खिलाड़ी आउट। फैमिलीज यहाँ पर मौजूद होती हैं फैजान, रोजाना हम फैमिलीज देखते हैं। कल तो एक इतनी मजेदार फैमिली आई हुई थी। देयर वाज अ ग्रैंडपा, देयर वर सम किड्स देयर, देयर वर पेरेंट्स देयर, सब मिलके आए हुए थे मैच देखने के लिए। ये देखें, पिछले विकेट निकल के खेलना चाहते थे, ऊंचा शॉट खेला था, लेकिन गेंद सीधी फील्डर के हाथों में, और एक अच्छा कैच। जाकिर मलिक ने अच्छी पोजीशन बनाई थी इस कैच को हासिल करने के लिए, बाउंड्री लाइन के करीब ही थी। टुक इट अबव हिज हेड, दीस आर नेवर इजी फैजान। दानिश, अब हर कैच तो सीधा हाथों में नहीं आएगा ना, कुछ मुश्किल कैचेस भी आएंगे। बिल्कुल, और वही टीम अच्छा परफॉर्म करती है जो मुश्किल कैचेस भी पकड़ने में कामयाब होती हैं। दानिश, यही अच्छे कैचेस, फील्डिंग के अटेम्प्ट्स जो आप सिंगल अक्सर बचाते हैं, एक रन जो बचाते हैं, इस तरह की अटेम्प्ट्स ही आपको काम आती हैं T20 क्रिकेट में खास तौर पर। बिल्कुल, और इस टूर्नामेंट में तरीन अकेडमी ने साबित किया है कि एक एक रन बचाकर आप किस तरह प्रेशर ऐड कर सकते हैं। मेरा ख्याल है अब तरीन अकेडमी ने ओपा कर दिया है उमर एसोसिएट्स को एज फेवरेट्स ऑफ दिस टूर्नामेंट। बिल्कुल, कल पोस्ट मैच सेरेमनी के बाद मेरी मोहम्मद वसीम से भी बात हो रही थी ऑफ द रिकॉर्ड। We'll talk about it. और मैं उनसे यही कह रहा था कि आपका मुकाबला अगर किसी से है तो उमर एसोसिएट से है। And he was very confident. He was like, पकड़ लेंगे अमन को। आप सीरियसनेस देखें इस टीम की कि मोहम्मद वसीम के लेवल का कोच एक रमजान टूर्नामेंट के लिए उस टीम के साथ मौजूद है। आई मीन दिस शोज कि कितना सीरियस है वो इस लेवल की क्रिकेट के लिए भी। बिल्कुल फैजान, good management matters no matter which tournament you're playing. That one was played above cover's head for a couple. जब आपकी मैनेजमेंट अच्छी होती है, एक ऐसा शख्स ऊपर बैठा हुआ हो जो ट्रूप्स को चला सके। Another very cute family here enjoying the match. बट आप इस हाई प्रोफाइल लेवल के कोचेस को आप देखते नहीं है इस तरह रमजान टूर्नामेंट्स में या क्लब क्रिकेट लेवल पे।
होना चाहिए, लेकिन होना फैजान, यही वो लेवल है जिसमें आपको बड़े कोचेस की जरूरत है, बिकॉज यहां से अगर आप बेसिक्स डेवलप कर लें, एक टीम की प्रिंसिपल्स बना दें उस टीम के, तो आप फिर आगे चल के अच्छी चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हैं उनसे। एग्जैक्टली। और यहाँ एक बार फिर ऊंचा शॉट खेला और इस बार देखते हैं कि और फील्डर कैच थामने में कामयाब। एक और नुकसान नेहा फैब्रिक्स को, यहाँ पर रन्स नहीं बन रहे, विकेटें गिरती जा रही हैं, और जब शॉट खेलते भी देखें कि रन बनाने की अटेम्प्ट की कोशिश की, ख्वाहिश जाहिर की, इंटेंट शो की कि बाउंड्री लाइन से बाहर ले जाए, लेकिन फील्डर का बाउंड्री के करीब बड़ा ही शानदार कैच। आरिफ खान मैनेजिंग टेक वेरी वेरी गुड वन देयर। बॉल बाउंड्री लाइन के उस पार जा ही रहा था कि उन्होंने अपने आप को शानदार अंदाज में प्लेस किया। दानियाल लतीफ गॉन फॉर 3, इट्स 68 फॉर 8। Neha Fabrics struggling yet again. They've already lost 8 wickets. This should be easy pickings for AO Hospitals, Faizan. They need to get to this score quickly. Inside 12 overs, एक बार फिर ऊंचा खेल दिया, गैर जिम्मेदाराना शॉट, और फील्डर ने भी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया उतनी ही। अब फ्रस्ट्रेशन दिखाने का क्या फायदा। नेहा फैब्रिक्स के खिलाड़ी बार बार मौका दे रहे कि हमें जल्दी आउट कर लें, लेकिन एओ के प्लेयर्स भी बड़ी फराग दिली का मुजाहरा कर रहे हैं। आरिफ खान थे ये जिन्होंने इससे पहले अच्छा कैच लिया था, इस बार इस बॉल को थाम नहीं सके, मगर अब बोल्ड हो गए। बैटर ने भी सोचा कि ये कैच तो नहीं हो रहे, बोल्ड ही हो जाए। That's wicket number 9 for Neha Fabrics. स्लॉक करना चाह रहे थे और ऐसा लगा कि बॉल को देख भी नहीं रहे थे। 69 पर 9 नुकसान, और नेहा फैब्रिक्स की मुश्किलात कम होने का नाम नहीं ले रही। इस टूर्नामेंट में किसी भी मौके पर अपोनेंट पर ओवर पावर ना हो सके। ये फतेह मुनव्वर बगैर कोई रन बनाए पवेलियन वापस। मैपल लीग फैज डिप्टी T20 का पावर्ड बाय पार्क सिटी। नेहा फैब्रिक्स पर मुकाबला एओ हॉस्पिटल्स, और इस मैच में एओ हॉस्पिटल्स पूरी तरह छाई हुई। नेहा फैब्रिक्स 69 पर 9 विकेटें गंवा चुकी है। 19वें ओवर का खेल जारी, सिर्फ 10 गेंदें बाकी इस मैच में नेहा की इनिंग्स के। मैच पे तो इतनी एक्साइटमेंट नजर नहीं आ रही है, कुछ ऐसा लेके आए कि हम एक्साइटमेंट पैदा कर सकें यहाँ पर। बस हम आपस में ही मुकाबला कर लेते हैं, कोई दानिश यहाँ पे कि थोड़ी एक्साइटमेंट आ जाए। यहाँ अपील की और अंपायर का इशारा के आउट, और इस तरह इनिंग्स तमाम। नेहा फैब्रिक्स की 69 रन पर 19.3 ओवर्स में, यानी एओ को हदफ मिलेगा 70 रन का। और आज एक बार फिर नेहा फैब्रिक्स ज्यादा बड़ा स्कोर न कर पाई, एक के बाद एक उनकी विकेटें गिरती रही। दिस इज हाउ द लास्ट वन फेल, और आज नेहा फैब्रिक्स एक बहुत ही कम टोटल पोस्ट कर पाई है। 70 रन का हदफ देंगे यहाँ पर एओ हॉस्पिटल्स की टीम को। अब देखना होगा कि वो कितनी जल्दी इस टारगेट को चेज करते हैं। फैजान, आई होप के दे चेज इट अंडर 10 ओवर्स।
हाँ, अभी तक हमने इमरान सिकंदर आउट फॉर अ गोल्डन डक, अभी तक हमने एओ हॉस्पिटल्स को आते ही अग्रेशन का मुजाहरा करते नहीं देखा है। तमाम टीम बहुत मोहतात नजर आई हैं। दे नीड टू गो ऑल आउट टुडे। देखिए यहाँ की कंडीशन इस तरह अलाउ नहीं करती कि फौरन आते ही ऑल आउट जाएं, एग्रेशन का मुजाहरा करें, थोड़ा ठहरते तहमुल करते हैं, तहमुल का मुजाहरा करते हैं, उसके बाद फिर अपने मसल्स फ्लैक्स करते हैं। बट ऑफ कोर्स क्योंकि इनको अपना नेट रन रेट भी बेहतर करना होगा, इनकी पोजीशन भी ग्रुप में टेबल्स पर अच्छी नजर नहीं आ रही, तो इनको अपना नेट रन रेट बेहतर करना होगा। अग्रेशन को डिफाइन करना बहुत जरूरी है फैजान। कल आपने अरबाज को देखा, उन्होंने अपनी कदमों का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने ज्यादा रैश शॉट्स नहीं खेले, उन्होंने स्लॉक करने की कोशिश नहीं की, लेकिन उसके बावजूद वो 170-175 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे। तो कंट्रोल्ड अग्रेशन बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं कि आप हाँ स्मार्ट क्रिकेट खेलें, आप जरूरी नहीं है कि आप स्लॉक करना शुरू कर दें। मॉडर्न डे क्रिकेट ना खास तौर पे हम अग्रेशन को जरा गलत तर्ज में ले गए हैं। लोग समझते हैं कि छक्के चौके मारने का नाम ही अग्रेशन है। अगर हम नेहा फैब्रिक्स की इनिंग्स की बात करें तो इब्तिदाई मराहिल से उनकी एक ना चलने दी एओ हॉस्पिटल्स की टीम ने। पहला ओवर ही स्पिनर से कराया गया और प्रेशर कायम रखा नेहा फैब्रिक्स की टीम पर। कहीं एक आध और चौका जरूर मिला नेहा फैब्रिक्स को, लेकिन उसके बाद खुजैमा की शानदार बॉलिंग जारी रही और एक के बाद एक विकेट भी हासिल करते रहे। जो कसर बैटर्स ने छोड़ी वो फील्डर्स ने पूरी की और रन आउट्स भी होते हुए देखे हमने नेहा फैब्रिक्स की जानिब से। देयर वर अ फ्यू गुड कैचेस टेकन ऑन द बाउंड्री लाइन एज वेल and there were a few batsmen who were trapped on the back foot. Good bowling by the spinners. राइट इस वक्त हम करेंगे साइड लाइन्स पे जहां मौजूद हैं हिना दीदार। किसके साथ हैं वो आपको बताएंगे। जी ऑन फील्ड इस वक्त मेरे साथ मौजूद है खन्नान अचकजई, नेहा फैब्रिक्स के बॉलर, जिनकी शानदार परफॉर्मेंस आज हमें देखने को मिली। आपने 3 विकेट्स लिए 11 रन देकर। सो अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह पाक का लाख शुक्र है कि परफॉर्म हुआ। बस यही कोशिश रहती है किसी भी फील्ड में, चाहे बॉलिंग हो, बैटिंग हो, बॉलिंग हो, तो 100% देने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल खन्नान, आपकी टीम की अगर ओवरऑल बात करें हम, आज का मैच तो वैसे भी अनकाउंटेबल है। जो लास्ट मैचेस के हवाले से बात करें तो व्हाट डू यू थिंक, आपकी टीम में ओवरऑल क्या मिस्टेक्स ऐसी नजर आई कि आप इस टाइम तो अनफॉर्चुनेटली क्वालिफाई नहीं कर पाए सेमीफाइनल के लिए? मेरा तो फर्स्ट मैच है, तो पिछले 2 मैच के लिए मैं अवेलेबल नहीं था, तो वो मैनेजमेंट को ज्यादा बेहतर पता होगा। अब नेक्स्ट टूर्नामेंट की बात करें अगले साल के लिए, व्हाट डू यू थिंक, फिर किस स्पिरिट के साथ आप लोग वापस आएंगे? इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि फाइनल विन के लिए खेलेंगे क्रिकेट, जो भी क्रिकेट खेले। थैंक यू सो मच। खन्नान अचकजई हमारे साथ मौजूद थे। बैक टू यू गाइस, दानिश एंड फैजान। राइट, आज एओ हॉस्पिटल्स की टीम ने हन्नान अचकजई को टीम में शामिल किया और उन्होंने जबरदस्त अंदाज में परफॉर्म किया अपनी टीम के लिए। दिस इज हाउ द बैटिंग कार्ड इज लुकिंग लाइक। नेहा फैब्रिक्स के लिए हसीब, साथ साथ मथी और रिजवान ही डबल फिगर्स में जा पाए, उसके अलावा कोई भी इंप्रेस नहीं कर पाया। और हनान ने 3 आउट किए एओ की जानिब से, 3.3 ओवर्स में 11 रन देकर, और एक रनआउट में भी कंट्रीब्यूट किया। अफनान और खुजैमा के 2-2 विकेट रही। असद और लाल ने 1-1 विकेट हासिल की। 69 पर पूरी टीम ऑल आउट। AO Hospitals, on the other hand, need to come out with an aggressive mindset here and chase this below average total down as quickly as possible. AO Hospitals will need 70 runs to win this one and have a possibility of qualifying for the semi-final as well. We'll take a break and we'll come back with AO Hospitals' response to this target. Edge. Oh, at the wicketkeeper's head. Has gone over the boundary ropes. Should be an easy chance. It is. Wrapped in the pad, big appeal, and the finger goes up. That has been taken.
1982 में श्रीलंका का दौरा पाकिस्तान, नेशनल स्टेडियम कराची। पहला एक रोजा मैच। पाकिस्तान के कप्तान जावेद मियांदाद का टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला। श्रीलंकन टीम के मुकर्रर करदा 40 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर 171 रन। कप्तान बंदूला वारनापुरा 77 रन के साथ नुमाया स्कोरर। पाकिस्तान की जानिब से ताहिर नक्काश, इकबाल कासिम और जलालुद्दीन की एक विकेट। पाकिस्तान ने मतलूबा हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर 29.2 ओवर्स में हासिल कर लिया। मोहसिन हसन खान की 85 रन की शानदार इनिंग्स। श्रीलंका के रवि रत्नायके की 1 विकेट। पाकिस्तान ने ये मैच 8 विकेटों से जीत लिया। ये नेशनल स्टेडियम कराची में एक रोजा मैचों की तारीख में पाकिस्तान की पहली फतह थी। जियो सुपर पे रमजान क्रिकेट का भरपूर मजा, भरपूर एनर्जी के साथ भरपूर क्रिकेट, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट के सुपरस्टार्स सरफराज अहमद, खुशदिल शाह, शान मसूद, असद शफीक, हैदर अली, आजम खान, अनवर अली, उमर अकमल, फहीम अशरफ, साइम अयूब, मेपल लीफ एचडी पट्टी 8 कॉर्पोरेट T20 कप, पावर्ड बाय पार्क व्यू सिटी। 7 से 15 अप्रैल DH स्पोर्ट्स क्लब, मोइन खान अकेडमी से बराह रास्त। सेफ जियो सुपर पे, जीत के जियो। हमारा और उनका खून जुदा था, जुदा है, जुदा रहेगा। जीनत के बगैर जिंदगी तो है। मोहब्बत करने की इजाजत नहीं है। मोहब्बत एक आरज़ू ही सही, तेरे शहर की खाक में खाक भी हो जाए तो अब कोई गम नहीं।
simple as that, isn't it? That didn't do very much, the ball, but it was a perfect line, perfect length, around off stump, in that corridor of uncertainty that creates doubt and problems for every batsman that's ever lived. And Rodgers, the guy who's been scoring heavily, watch this. Just does a little bit, doesn't it? Didn't do much, but it was the right area, and everything that was offered up there at Edgbaston was taken. So a good catch, and that's his 300th wicket. Well, there you are. Thank you very much. As soon as the ball does a bit, they've had it. They can't play the moving ball. It just does a little bit. Well bowled, Stuart Broad. England on fire. Australia absolutely miserable. Catch. There you are. Simple as that. They just cannot play against the moving ball. And this is just a little bit of movement. Oh, out! Oh, what a catch! What a brilliant catch! England on fire! The Ashes are just about won this morning. What a corker that was! Big edge from Burgess. Stokes at a fifth slip, he was Superman. The way that right arm was out. Have a go at this. Wow, that is a catch. That's brilliant stuff. Oh, yes! Stuart Broad has done something very special. A 5-wicket haul in just 19 balls. That equals the fastest 5-wicket haul ever in the history of the game. Only the Australian Ernie Toshak back in 1947 could match that from Broad. Good grab too from Alistair Cook. Quite brilliant from England. The catch in, the bowling of Broad. And that's another one. And it's the same kind of dismissal that's characterised the whole of this appalling Australian batting performance. Oh, can you believe it? Complete repeat performance. Johnson this time just fiddling outside off stump. Actually, that was an excellent ball from Stuart Broad, and these are his best figures. 7 for 11. Catch, simple as that. And eventually Stuart Broad has got a rich reward. He deserves it. Absolutely deserves it for all the other wickets he got early on against the top-class batsmen. To get tail-ender outlier, nothing special there, but for him, it's been a special day. Got 307 wickets, levelled with the great, one of the all-time greats, the best action ever, Fred Truman. And he's got 8 for 15, 9.3 overs, destroyed Australia. The Ashes have won. It's as simple as that. And Australia, all out 60. Unbelievable cricket. It's wonderful. Welcome back for this run chase in this match number 9 of Maple Leaf HD 38 Corporate T20 Cup powered by Parkview City. अब से कुछ ही देर पहले हमने देखा आज के दिन के पहले मैच में नेहा फैब्रिक्स ने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया और सिर्फ 69 रन पे ही उनकी टीम पूरी ढेर हो गई और अपने 20 मुकर्रर ओवर्स भी नहीं खेल सके। और अगर हम बॉलिंग की बात करें तो एओ हॉस्पिटल्स के तमाम ही बॉलर्स विकेट लेने में कामयाब हुए, स्पेशली हनान अचकजई जिनको खासतौर पर आज के मैच में प्लेइंग 11 में शामिल किया गया था। 3 विकेट्स ली और इस बात की याद दहानी कराई कि नेहा फैब्रिक्स आज भी एक लो स्कोर पे ऑल आउट हो गए। I've been joined by Sikandar Bakht alongside me in the commentary box. Welcome back, Sikandar bhai. Welcome. Thank you. अब यार मुझे जो फील आया है ना वो ये कि नेहा जो फैब्रिक्स है उन्होंने नए बच्चों को आजमाया और जिनको जो जितनी मैंने बैटिंग और से देख रहा था, मैंने एक दफा आपको कहा भी था कि मुझे ऐसी फीलिंग आई कि ये बच्चों को टर्फ पे खेलने का इतना एक्सपीरियंस नहीं है। ये सारे नए बच्चे हैं, इनको इतना एक्सपीरियंस नहीं, उनका जो बल्ले का जो रुख था या बल्ले का इस्तेमाल था क्रीज के ऊपर वो इतना मज़ेदार नहीं था। सिर्फ 70 रन पे देखेंगे वो आउट हो गए और जो एओ को जो टारगेट मिला है वो 120 गेंदों पे 70, जो कि बहुत ही आसान सा लगता है। तो वो फीलिंग मुझे आ रही थी कि ये बच्चों को जो है ना
नई जगह पे एक्सपोजर मिला है, which is a good thing. It's a good sign. The youngsters get a chance to play against good teams in front of the cameras on the turf pitch. जब हम छोटे थे तो हमें भी जो है सीमेंट के ऊपर हम खेलते थे और टर्फ पे खेलने का जब मौका मिलता था तो हम खुशी से जो है वो रात भर नींद नहीं आती थी कि आज हम टर्फ के ऊपर खेलेंगे. तो ये बच्चों को भी मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि उनके जो खेलने का अंदाज है वो सीमेंट वाला है, इसीलिए वो स्पिन को खासतौर पे वो हैंडल नहीं कर पा रहे. खैर एनीवे 70 रन हैं, देखते हैं कि इसको ये कैसे डील करते हैं. Exactly, Sikandar, they must have a lot to learn from this tournament. Obviously, they won't be playing any further part. Even if they manage to win this game tonight, they won't be qualifying for the semi-finals. But on the other hand, AO Hospitals know that not only do they need to win this game, but they need to win this by a big margin, and that is the reason why Sohail Khan has been sent to open the batting yet again tonight. He opened the batting last night as well, scored 25 runs to his name. Sohail Khan, the wicket-keeper batter. And alongside him is another big right-hander, Zakir Malik, who was going so well last night against Tareen Academy. Unfortunately, played another rare shot and lost his wicket. Sohail Khan is going to be facing the first ball. Zakir Malik at the non-striker's end. Daniel Latif has been given the ball. A fast bowler, having a fielder at third man and fine leg. No fielder standing outside the inner ring on either side of the wicket, and we are all set for the first ball in this run chase. Starts off with the wide-ish delivery outside the off stump. In fact, it has been given as a wide as well by the on-field umpire Ali Haider. Well, as I said, they don't have the experience and the exposure for this kind of a match or for this kind of a cricket. So you can see there is nothing, there is no attacking cricket right now. They have 70 runs on the board, which is nothing. So at least they should have a slip. Where is the third man? Okay, third man is okay, but they have to take wickets. Thrashed on the offside. Beautiful piece of timing by Sohail Khan. He's going to collect his first boundary of the very second ball of the innings. Once again, too short, too wide outside the off stump, asking to be hit, and Sohail Khan accepting the invitation there. Good shot. Short, as you said, the ball was pretty short outside the off stump. And Sohail Khan timed it very well. And he was standing outside the crease too. That means that he was targeting the bowler. He was sure that he's going to pitch short and outside the off stump. Slightly wide, and again it was fuller in length. He missed an opportunity there, Sohail Khan. Otherwise, he might have collected another boundary there. Yes, you were right, Sikandar. I think he knows Daniel is not an express pace bowler, so he's standing outside his crease. Well, this ball, the previous ball was a little bit better. Pitched up, moved a little bit. So I think they should have a slip. Otherwise, there is no use. It looks like they have accepted that they're going to lose the match, so they don't want to try anything. They have to try. Bring up a spinner. Bring up a spinner, have a slip. Youngsters are here on the ground with their parents, with the family. Yeah, failing to try is still better than trying and failing. At least they need to put up a fight here, Neha Fabrics, tonight. It's their last game of the tournament, and they again not have many runs to play with, but they can still show some aggression by having one or two fielders more inside the inner ring, especially the fielder at first slip. Once again, the ball not bouncing as much as Sohail Khan was expecting it to. Maybe that is the reason why as well he was standing outside his crease. Well, Sohail Khan should take this match as a practice match. There's nothing much, not a big target. So he should play like a proper cricketer and do some practice rather than playing those. My goodness, where is that going? One bounce into the fence, asking to be hit yet again, and Sohail Khan this time to the other side of the wicket.
collecting yet another 4. Not good starters from Daniel. I think he's playing his first game of the tournament, Daniel. We haven't seen him bowl previously in the first 2 matches for Neha Fabrics. Once again, not much pace, and bowling at that lane, you are asking for trouble. Yeah, too short and easy to hit. With the batsman, things are very easy for the batsmen. They have no pressure at all, no catching positions, nothing. The bowlers are bowling short with a friendly pace. That should clearly go out of the ground. Yes, it does. Beautiful piece of timing by Sohail Khan. The arms are aloft from Ali Haider, which shows that Sohail Khan has collected the first maximum of the innings. We were waiting for some fireworks. We couldn't see them in the first innings. Already we have seen 2 boundaries and a 6 in the very first over of this run chase. Well, you're looking for the firework. So these boys, they just want to finish this match as early as possible so they can go back home. And well, still I will say that it's a good experience for the Neha Fabrics players. And I hope they learn a lot from this tournament. 15 runs coming in that opening over. We saw 2 boundaries and a 6, all coming from the bat of Sohail Khan. And the trouble is not over yet for Neha Fabrics. Although Imran Sikandar is going to be bowling the second over, but up against him is going to be Zakir Malik. And we all know the capabilities, the abilities Zakir Malik possesses. He showed some glimpses last night as well against Tareen Academy, where he collected few boundaries. But then unfortunately he was dismissed, courtesy of that very good catch by Hassan Khan on the bowling of Ali Majid. Well, both the batsmen are not in the mood of playing, waiting for the target. They just want to finish it as early as possible. Starts off with a wide down the leg side. Again, not much pace behind that ball from Sikandar. Fourth umpire Shahid Aslam just checking the conditions of the reserve balls. Even Sikandar has not opted to have a fielder at first slip. Mid-on, mid-off, both inside the 30-yard circle. A pickup shot on the leg side. It has been dropped. That should have been taken. What a wicket that would have been. What a confidence booster that would have been for Sikandar if that catch has been taken by the fielder at square leg. It was a slower delivery. I think Zakir was expecting a bit more pace behind that ball, and although he jumped in the air, that should have been taken, Sikandar bhai. Well, first it was low scorer. They have scored and now dropping the catches. And now the wicketkeeper not collecting the ball properly. So in Urdu we say sone pe suhaga, ke na run हुए ना कैच, उस पर कैच भी छोड़ दिया, विकेट कीपर भी गेंद नहीं पकड़ रहे, तो इसको हम यही कह सकते हैं. And I'm really surprised they have started with 2 pacers earlier on in the innings. Whereas we saw in the first innings, the left-arm spinners were clearly making things difficult for the batters. It would have been much better if a spinner would have been bowling at this time of the innings. You don't have many runs to play with. You need wickets. Too wide. It's going to go all the way for 4 again. What is happening out here for Neha Fabrics? 5 more runs added to the total without a ball being bowled. They don't have to do much. The opposition are doing them themselves. Well, that was a super wide, I can call it. Poor lad. He doesn't have a control. And it might be because of he doesn't have experience of bowling on a tough wicket. And this is our sponsors, Park View City. They are there to sell their apartments and plots and waiting for the clients. Much better. Playing it on the leg side, Zakir Malik collecting yet another single. Yes, Parkview City are the powering partners of this 8th corporate T20 Cup. They have their stall installed right at the entrance of this ground. Sohail Khan clearly being the aggressor in this partnership.
2 boundaries and a 6 to his name already. What an over this is turning out to be for AO Hospitals. 4 balls still to come. Once again playing it on the leg side. He knows he has got enough runs in this over already, 11 runs, so I don't think they might go for another risky shot as long as Sikandar does not bowl a bad ball. Well, this one was a better ball, on a better line, better length. I don't know which building is this. This is the same building? I've seen this building for the last 6-7 years, just like this. They're not finishing it up. Yeah, it's right in front of the Creek Vista Apartments, and the grey structure is ready. I hope the position is... It has been ready for last 7-8 years. Much better line, much better length now by Sikandar. That's why he needs to be bowling much more. Runs in this over already, 1 ball still remaining from Sikandar, so he has clearly learned after bowling few wides. जो पीछे रोशनी नजर आ रही है ना, ये हमारा पोर्ट है, दूर से आप देख रहे हैं, बहुत एक्टिव है, बिल्कुल दूर पीछे आखिरी के अंदर जो ब्राइट सी लाइट्स हैं, और इस वक्त भी एक्टिविटीज वहां पे जारी हैं. There are so many names for Karachi City of Lights, City of Port. Well, this kid is sitting alone. She's here without her friends. And these guys are all together. I think they were here a few days ago as well when they were taking your autograph, Sikandar bhai. Who? These people standing taking behind the long on fielder. For a change. It's going to be another wide. Again, it has not been kept by the wicket keeper. 2 more runs added to the total. This is turning out to be a very long over than usual from Sikandar. We haven't seen any aggression so far from Zakir Malik, although he was very aggressive last night against Tareen Academy. It's the aggression that brought his downfall as well. This chip sets on his legs. He's going to take a single, keep the strike at the start of next over. After 2, it's 30 for none. दो ओवर से खिताब पे 30 रन्स बगैर किसी नुकसान के एओ हॉस्पिटल सिर्फ 40 रन्स की दूरी पे है अपने इस टूर्नामेंट में दूसरी कामयाबी हासिल करने से, और एक अच्छा स्टार्ट यहाँ पे देखने को मिला है जाकिर मलिक और सुहेल खान की तरफ से. दोनों ही ओपनिंग बॉलर्स ने पहले ओवर में 15-15 रन दिए हैं और काफी आसान कर दिया है यहाँ पे दोनों ओपनर्स के लिए हदफ हासिल करना. दानियाल अपने दूसरे ओवर खेल जारी रखेंगे. एक बार फिर हम देख सकते हैं कि स्लिप पोजीशन पे कोई भी फील्डर मौजूद नहीं है और इस दफा जाकिर मलिक हैं स्ट्राइक पे, और उनको कोशिश वो करेंगे कि अब यहाँ बाउंड्रीज हासिल करें. डीप मिड विकेट पे एक फील्डर मौजूद और फाइन लेग पे एक फील्डर लिया है. थर्ड मैन का भी इदारे के अंदर लेके आ गए हैं दानियाल. बड़ा शॉट खेले हैं, मिड ऑफ के ऊपर से निकालने में कामयाब हुए हैं. कनेक्शन इतना प्रॉपर नहीं है इसलिए सिर्फ 2 ही रन, इनफैक्ट सिर्फ 1 रन यहाँ पे मिलेगा जाकिर मलिक को. होता ये कि जब बॉलर की जो कप्तान होता है वो भी बेचारा फंस जाता है ऐसे मौकों पे.
जब बॉलर को लाइन ना मिल रही हो, लेंथ ना मिल रही हो और वो थोड़ा वाइड बॉलिंग कर रहा हो तो उसके समझ में नहीं आता कि किस किस्म की फील्डिंग सेट करे। उस बेचारे का भी कसूर नहीं होता। जो बॉलर्स हैं वाइड बॉलिंग भी कर रहे हैं, विकेट कीपर गेंदें भी नहीं पकड़ रहा, तो कप्तान के लिए बहुत ही एक इशू होता है कि मैं फील्ड कैसे सेट करूं। तो यहाँ पर भी मुझे यही चीज नजर आती है। Once again played on the offside. This is a remarkable stroke from Sohail Khan. What a shot yet again from the right-handed batter. It's the second six that he has collected in that very region, in that very similar stroke. It's fuller in length, it's asking to be hit, sitting down on one knee, playing it comfortably over extra cover and getting the maximum result to his name. This was very well timed. Excellent timing. And it was over the head of extra cover. Good shot. Rather than playing behind the stump, that scoop shot and all those kind of new innovated shots, it's better to play towards the cover, extra cover, long on, long off. That's my theory. That was the port you were talking about, Sikandar bhai. We can see a strong breeze flowing across the ground here tonight. So if a fast bowler can bowl in the right channel, they can get some movement in the air. I think जो अभी दिखाया था शायद ये golf club है. मैं फिर से बोलूँगा उन्हें दिखाया. This time over, long gone, and that is going to fall for yet another boundary. In fact, one bounce into the fence. There is no stopping Sohail Khan tonight. He's in a mood of murdering everything in there in his arc. Once again, the ball just tailing into the right-hander. He cleared his front leg, although there was a long-on fielder in place, but he comfortably hit it wider of him and collected yet another four. He has completely taken measure of Daniel. Sohail Khan, he collected 2 boundaries and a maximum in his first over and now has collected a maximum and a boundary. He wants to finish the things off as early as possible. The square leg fielder has now been shifted towards the mid-wicket. Ali Manzoor, the captain of Neha Fabrics, was keeping the wickets in the previous game. I am still finding it difficult to locate him in the outfield tonight. Well, he had already made some room for himself. I think he was looking to blast that ball on the offside. Just hit it straight and enough and picked up yet another single. 42 for 1. 42 for none. In fact, we are still into the third over of the innings. If they can continue to bat like this, the match is going to get over during the batting power play. On the other hand, Zakir Malik has now an opportunity I have a feeling to they're collect going to few finish boundaries it to in his the name. 6th over. Don't you think, Zishan? They're going to finish it in the 6th over. Yeah, batting power play should be enough. The way these two batters are batting. Thrashed on the offside, this time by Zakir Malik. One bounce into the fence. He was complaining from Sohail Khan that he wanted to get on strike. That is the reason why Sohail Khan picked up that single, and Zakir Malik now joining the party as well. Too wide outside the off stump, asking to be hit, especially when you haven't taken any fielder outside the inner ring on the offside. Easy pickings for both these openers. 16 runs of this over already with the ball to be bowled. Over third man taken, it is, yes it is. Zakir Malik, he's not having a good time at all in this tournament. Again, it was there to be hit, might have been deceived by the slowness of the ball. And Rizwan standing there at short third man, taking it in the second attempt. That's bad luck. He was caught at the short third man. And he went for a big drive, got outside edge, and the short third man was fielding at a 30-yard circle, and he was out there. Zakir Malik out, caught by Rizwan, bowled by Daniel, and it's 46 for 1.
Well, the new man is Hanan Achekzai. और अनान अचेक्ज़ई इज द न्यू बैट्समैन. ये आखिरी प्लेयर आउट हुआ था, उसने बहुत जोर का मारा था, वो शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर जो है उसने कैच पकड़ा और इस तरह वो एक और पहली विकेट गिरी है और काफ़ी तेज़ी के साथ रन बन रहे हैं. 70 टारगेट है, बहुत कम है. और मुझे ज्वाइन किया है अजहर हमीद साहब ने, जो कि टूर्नामेंट डायरेक्टर भी हैं, कोयटा ग्लैडिएटर के भी डायरेक्टर हैं. जी थैंक यू सो मच सिकंदर. और कहाँ डायरेक्टर? कोयटा ग्लैडिएटर्स का सीईओ हूँ मैं. सीईओ है, अच्छा. और यहाँ का टूर्नामेंट डायरेक्टर. और जोरदार तरीके से खेलने की कोशिश की थी, मगर मैंने जैसे कहा कि अभी तक कप्तान ने स्पिनर्स नहीं लगा, उनको लगाना चाहिए था. एनीवे, मैं अजहर हमीद साहब को ये भी इंट्रोडक्शन करा दूं. मेरी जब इनसे मुलाकात हुई थी, एक तो ये टीवी पे एक्सपर्ट कमेंट्स भी देते थे, उसके अलावा ये ही वाज द चेयरमैन एम्प्लॉयज ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन, जहाँ पे हम वो सारे एम्प्लॉयज जो जॉब्स करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, उसके बदले में उन्हें ओल्ड एज बेनिफिट्स मिलते हैं. कैसा लगा वो काम? लोग जबरदस्त काम था. मैं थोड़ा उस क्रिकेट पे आता हूँ, मगर पहले ये तो पूछूं कि आपको मैंने एज अ चेयरमैन वहाँ देखा, बहुत ही जबरदस्त पोस्ट थी वो तो. जी सिकंदर, आई वाज अ सिविल सर्वेंट, सर्व्ड द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फॉर ऑलमोस्ट 32 इयर्स, और माय लास्ट पोस्टिंग वाज चेयरमैन यूबीआई. उससे पहले खासी मिनिस्ट्रीज में भी मैं पोस्टिंग करता रहा. ये सवाल पूछना तो बिल्कुल फजूल होगा कि क्रिकेट कब से शौक हुआ. तो ऑब्वियसली बचपन से शौक होगा. हर शख्स को क्रिकेट का शौक होता है. पाकिस्तान में इज अ क्रिकेट आई बिलीव इज अ बाइंडिंग फोर्स. Absolutely, and अगर if you come from Kent Public School और या भी पब्लिक स्कूल, ये ना बोलें यार, तो क्योंकि मैं सेंट लॉरेंस से था, हमारे यहाँ भी क्रिकेट होती नहीं, मैं वही मैं स्कूल्स आपको गिनवा रहा था कि अगर इन स्कूल से आप आ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाता है कि फिर स्पोर्ट्स बैकग्राउंड तो होगा, और स्पेशली क्रिकेट का. हर बच्चे का स्पोर्ट्स बैकग्राउंड होना चाहिए. एक और 2 रन और बन गए हैं और आहिस्ता आहिस्ता स्कोर जो है बढ़ता हुआ. इट्स नाउ 49 for 1 और अभी ये चौथा ही ओवर है. जब मेरे ख्याल से तो उनको स्पिनर्स लगा देने चाहिए थे. और अब थोड़ा सा मैं क्रिकेट की तरफ आता हूँ. थोड़ा सा पहले मैं इस रमजान टूर्नामेंट के एज अ डायरेक्टर, अब मुझे ये बताओ कितना मुश्किल होता है सबसे पहले स्पॉन्सर्स ढूंढना. स्पॉन्सर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. डू यू थिंक कि लोग आते हैं या आप लोगों को बहुत उनके पीछे भागना पड़ता है? सिकंदर, पहली तो चीज़ है कि आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो डिटरमिन करती है कि आपको स्पॉन्सरशिप में कितनी आसानी या दुश्वारी होगी. और जिस तरह से कुछ डिफ़िकल्टी इस साल इकोनॉमिकली पूरा आपको पता है, कोविड की वजह से डाउनटर्न वैसे भी आया हुआ है, रिसेशन चल रही है, और साथ फिर स्पेसिफिकली कंट्री वाइड जो है आपकी सिचुएशन है, तो बिल्कुल डिफ़िकल्टीज तो ज़रूर होती हैं स्पॉन्सरशिप के लिए. लेकिन अगर आपके माँ की टूर्नामेंट्स हों, लाइक जो कॉर्पोरेट T20 रमज़ान का टूर्नामेंट है, वो दैट वाज अ रेगुलर फीचर इन कराची, और कोविड की वजह से 2-3 साल का ब्रेक आया था. इस बार जब वापस रिवाइव हुआ है. वाइट बॉल. हमारे साथ अजहर हमीद है. मैं बताता हूँ, लोग सोच रहे हैं कि कौन सा आप बोल रहे हैं. अजहर हमीद साहब जो हैं डायरेक्टर इस टूर्नामेंट के हैं, तो मैं उनसे यही पूछ रहा था. तो इस दफ़ा भी आप लोगों ने माशाल्लाह से 3-4 अच्छे तगड़े स्पॉन्सर्स ढूंढ लिए. दैट्स अ गुड साइन. जी एग्जैक्टली. और इंक्वायरीज पहले से थी इस टूर्नामेंट के लिए, और मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत मुश्किल हुई, लेकिन मेरे ख्याल में दे वर विलिंग स्पॉन्सर्स जो कि दे वर फोर्थ कमिंग, और उन्होंने पहले से हमें कांटेक्ट किया हुआ था. सो मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि रिवाइवल ऑफ कॉर्पोरेट T20 टूर्नामेंट एट मोइन खां अकेडमी DHA स्पोर्ट्स क्लब, क्योंकि ये 3 साल का जो कोविड का ब्रेक आया था, उसकी वजह से जो है यहाँ बिल्कुल कोई क्रिकेट नहीं हुई थी. लेकिन ये दिस इज सपोज टू बी अ मार्की इवेंट फॉर DHA स्पोर्ट्स क्लब मोइन खां अकेडमी, और अल्हम्दुलिल्लाह टूर्नामेंट अब तक तो खासा अच्छा गया. वेल, फिर उन्होंने कोशिश की थी जोरदार शॉट मारने की, मगर इनसाइड एज होता हुआ गेंद शॉर्ट फाइनल की तरफ गया. और हम आपको पहले बता चुके हैं कि जो नेहा फैब्रिक्स है, उन्होंने पहले बैटिंग की, 70 पे वो आउट हो गए. और ये बड़ा खूबसूरत सा व्यू है स्टेडियम और क्रिक विस्टा के बीच के. ये रोड है जिसपे स्कूल भी वाक़ हैं, बहुत से ज़बरदस्त किस्म की जगहें हैं यहाँ पर. और ये रोड सीधा गोल्फ क्लब चला जाता है DHA का. बहुत ही खूबसूरत गोल्फ कोर्स है अगर किसी को गोल्फ खेलने का शौक हो. तो अभी 6 ओवर भी नहीं हुए हैं. ये मतलब चौथे ओवर की आखिरी गेंद है, और देखते हैं कि इस ओवर में क्या होता है. इस गेंद पे स्लो बॉल किया और उन्होंने आराम से खेल कर रन देना चाहते थे, मना कर दिया. इस तरह 4 ओवर मुकम्मल हो गए. 52 for 1.
हम जो है वो क्रिकेट पे बात करें, क्रिकेट के बाद जो मैं उसमें करें चला के बीच में चीज़ें पूछता इसलिए कि वैसी मैं टीमों का भी पूछूँगा, ये टीमें मैं आपको जो मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि बड़ा खूबसूरत ये रोड है, बहुत ही बिजी रोड है ये। स्टेडियम का खूबसूरत व्यू है और उसके लेफ्ट साइड पे आपको क्रिक विस्टा के अपार्टमेंट्स हैं जो कि डीएचए रन करता है। इस रोड के ऊपर बहुत ही खूबसूरत स्कूल हैं, बड़े बड़े स्कूल हैं, ह्यूज किस्म के, और रोड ये गाउस पर जाता है। और ये 4 ओवर मुकम्मल हो गए हैं, 52 रन, 1 खिलाड़ी आउट। मेरे साथ अजहर हमीद हैं जो कि डायरेक्टर हैं। और कई टीमें ऐसी लग रही हैं कि थोड़ी सी जो है वो इस कंपटीशन के लिए शायद तैयार नहीं है। नए बॉलर आ गए हैं, फतेह मुनव्वर, ही सीम्स टू बी एन ऑफ स्पिनर, जिस तरह के वो नहीं, ये सीमर ही लग रहे हैं। जिस तरह ग्रिप कर रहा था वो बॉलर को मैं समझा कि सीम कर रहे हैं, और विकेट कीपर ऊपर आ गए हैं, तो देखते हैं ये किस किस्म की बॉल कर रहे हैं। फील्ड की सेटिंग हो रही है इस वक्त। मेरे ख्याल से तो उनको थोड़ा सा ऊपर एक स्लिप तो रखनी चाहिए, अगर वो आउट नहीं करेंगे तो फिर मैच बनेगा कैसे। और 52 for 1 तो हो चुका है ऑलरेडी स्कोर। आपको ऐसा नहीं लगा कि एक आधी टीम थोड़ी सी थोड़ा सा स्टैंडर्ड, वो थोड़ा सा बच्चों का इतना अच्छा नहीं है? एक रन और बनेगा। जी सिकंदर, हमने क्योंकि रमजान के अंदर खासे टूर्नामेंट्स होते हैं कराची में, नया नाज़माबाद, असगर अली शाह, फिर जिम खाना में, और फिर नेहा अकेडमी में भी रिवाइवल हुआ है, तो हमने गेस्ट प्लेयर्स का एक क्लॉज रखा था जिसमें हम गेस्ट प्लेयर्स 3 से 4 प्लेयर्स जो है वो इंक्लूड कर सकते थे। अनफॉर्चुनेटली नेहा फैब्रिक्स के जो 3-4 प्लेयर्स थे, उनका जो पाकिस्तान टीम का कैंप लगा है उसमें वो गेस्ट प्लेयर्स को इनवाइट नहीं कर सके क्योंकि पीसीबी ने उनको रिटेन कर लिया, तो इसलिए जरा थोड़ा सा मसला हुआ है इनको। चलिए, ये इस किस्म की चीजें होती रहती। अच्छा, अब थोड़ा सा गैप है, अभी तो बॉलिंग चल रही है और क्राउड भी थोड़ा जमा हो रहा है। सेकंड मैच थोड़ा तगड़ा है, हो सकता है में तो ज्यादा अच्छे लोग और ज्यादा लोग आएंगे, अच्छे प्लेयर आएंगे। फुल टॉस और हो सकता है कैच आउट हो जाए और ड्रॉप कर दिया। आपके ग्राउंड में कुछ है? हमने पहली इनिंग्स में भी देखा था कि 6-7 कैचेस ड्रॉप हुए, और ये भी थोड़ा सा मुश्किल था। पीछे भागते हुए उन्होंने कैच लेने की कोशिश की, लेकिन बहरहाल इतना मुश्किल भी नहीं था कि वो उसको ड्रॉप कर देते। वेल, खेल का हिस्सा होता है, मगर कैचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, और जो टीम अच्छा कैचिंग करती है वो हमेशा आगे की तरफ निकल जाती है। एक और जोरदार उठा के शॉट खेला, एक और कैच का चांस, और इस दफा पकड़ लिया, और ये ज्यादा मुश्किल कैच था जो उन्होंने पकड़ लिया। जी, ब्यूटीफुल रनिंग कैच, डीप मिड ऑन के ऊपर अपने राइट साइड पे भागते हुए कैच लिया, रनिंग कैच था जबरदस्त, और दूसरा विकेट आउट हुआ है। 54 for 2 नाउ। और ये देखें एक्शन रिप्ले के अंदर, और उठा के खेला था, मेरे ख्याल से वो भी उन्होंने सोचा यार अब मैं खत्म करूं इसको, मगर ये बड़ा अच्छा कैच भागते हुए इस लड़के ने पकड़ा। तो देखें इसमें इस बच्चे को ने नजरें गेंद से नहीं हटाई, जो इम्पोर्टेंट था। सोहेल आउट है 29 रन बनाकर, और इस तरह 54 पे 2 खिलाड़ी आउट हो गए। सिकंदर, जो नेक्स्ट मैच है वो उमर स्पोर्ट्स और तरीन एकेडमी, सॉरी मेरे ख्याल में तरीन एकेडमी के साथ है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड मैच, क्योंकि प्रॉब्ली द मोस्ट फिटेस्ट और यंग टीम जो है वो तरीन एकेडमी की। उमर एसोसिएट्स की टीम भी अच्छी है, तो अगर इन दोनों का मैच है तो आज वाकई बहुत मजेदार मैच होगा। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा आए देखें। हो सकता है कि ये नया बैट्समैन आके मोहम्मद अख्तर राइट हैंड बैटिंग करते हैं, और लास्ट टाइम भी उन्होंने बड़े जोरदार छक्के मारे थे। ये वो आखिरी डिसमिसल है कि उन्होंने कोशिश की थी कि उसको क्रॉस कर दें, मगर फील्डर ज्यादा तेज निकले, उन्होंने बहुत अच्छा कैच पकड़ा। ओह, विकेट कीपर ने फिर कैच बॉल छोड़ी है। एक और बाय के 4 हो जाएंगे मुझे लगता है, और ये 4 हो गए। फाइनल रिचुअल्स हैं मेरे ख्याल में, इस ओवर में ही शायद मैच इख्तिताम को पहुंचा है। 58 for 2, 12 रन रह गए जीत के लिए।
और विकेट कीपर भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा वीक साइड के ऊपर हैं और 17 एक्स्ट्राज अब तक हो चुके हैं। और जो हम बात कर रहे थे जुनैद अली शाह हैं और मोइन खान, जुनैद अली शाह की टीम है एओ क्लिनिक, और मोइन खान जो इस क्लब में अपनी एकेडमी चलाते हैं। मिसफील्ड 2 रन आराम से हो देंगे। थ्रो सीधी विकेट कीपर के पास, अच्छी थ्रो थी, राइट ऑन द टॉप। 5 ओवर मुकम्मल, 60 पर 2। राइट, ये आखिरी खिलाड़ी जिसने शॉट मारा था और बहुत ही खूबसूरत कैच पकड़ा, बहुत अच्छा। नजरें गेंद पे थी आखिरी वक्त तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी फील्डर के लिए कि नजरें बिल्कुल गेंद से हटनी नहीं चाहिए। आप दाएं बाएं ना देखेंगे कौन बैठा मुझे देख रहा है। 5 ओवर मुकम्मल हो गए हैं, 60 पे 2। माय गॉड, गेंद इतना पीछे था, मेरे ख्याल से तो इसको स्कूल में चला जाना चाहिए था जहां वो बराबर मिड विकेट पे है, मगर वो नहीं गया उधर। मती हैं बॉलर और इस वक्त ड्राइव किया, बॉलर्स बैक ड्राइव, अच्छी फील्डिंग बॉलर की। स्कोर 60 for 2। 6वां ओवर इस वक्त जारी है। शॉर्ट गेंद था, मिड विकेट की तरफ 1 रन खेला। कोशिश नहीं की नेहा ने इस मैच में, खास तौर पे मैं कहूंगा 70 रन तो थे, मैं मानता हूं 9 रन रह गए हैं, मगर फिर भी एक अटेम्प्ट करनी चाहिए थी, कोई प्रेशर डाल के कुछ फील्ड वगैरह में कोई चीज करने की कोशिश करते, मगर नहीं हुआ। और मतलब एक जो पहले जो पावर प्ले होता है उसी के अंदर तकरीबन वो स्कोर बराबर ही हो गया है, तकरीबन होने वाला है। इनएक्सपीरियंस जो है वो सामने नजर आ रहा है। मेरे ख्याल में टीम अगर इसको एक्सपोजर मिलता रहेगा तो इसमें 2-3 प्लेयर बहुत अच्छे हैं और उम्मीद है कि अगर अगले साल टूर्नामेंट्स में एक्सपोजर मिलता रहा तो अच्छा खेलेंगे। हवा में है और एक फील्डर तेजी के साथ भाग रहा है, डाइव भी किया मगर नहीं पकड़ सका। काफी दूर था वैसे कैच, इतना आसान नहीं था ये। जी, अच्छी अटेम्प्ट की, डीप मिड ऑन से फील्डर ने भरपूर कोशिश की, आखिर में डाइव भी लगाई, लेकिन कैच दूर था उनकी दस्तरस से और मेरे ख्याल में शायद बॉल को टच भी नहीं कर सके। सो डिफिकल्ट कैच बट अ ग्रेट अटेम्प्ट। जो नया बच्चा होता है ना उसमें ये जो एनर्जी होती है ना कि मैंने करना है कुछ, और यही चीज फील्डर ने दिखाई थी कि भागता हुआ गया, आखिरी तक इसने कोशिश की, स्लाइड भी किया, डाइव भी मारी, मगर नहीं पहुंच सका वो। मगर वो जो एनर्जी थी वो थी उसके पास, बच्चे के पास, जो होनी चाहिए। जी बिल्कुल सिकंदर, इंटेंट और एफर्ट दोनों हमें जबरदस्त तरीके से नजर आए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कैच ना कर सके। आराम से 1 रन बना लिया एक और, अब सिर्फ 5 रन रह गए। 65 पे 2, 6 ओवर मुकम्मल। सिकंदर एज अ पास्ट सेलिब्रेटेड क्रिकेटर, मैं चाहूंगा, ये तो मैच हो ही रहा है, न्यूजीलैंड की सीरीज में आपका क्या ख्याल है? मेरे ख्याल में जो न्यूजीलैंड की टीम यहाँ आई है उसमें काफी मार्की प्लेयर्स तो इस वक्त आईपीएल खेल रहे हैं। सो ये टीम न्यूजीलैंड की, मैं ये नहीं कहूंगा कि अगर उनकी फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड है, तो आपका क्या ख्याल है इसके मैचेस कैसे होंगे इनके खिलाफ?
देखिए अब वो तो होता रहता है। देखिए पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जहाँ पे अफगानिस्तान के खिलाफ थोड़ा सा रेस्ट दिया तो लोगों ने शोर मचा दिया, वरना दुनिया भर में ये चीज़ें चलती हैं। लोग अपनी टीमें बनाने के लिए मेन प्लेयर्स को रेस्ट देते हैं, नए प्लेयरों को खिलाते हैं ताकि एक्सपीरियंस हो। और हमारे यहाँ एक अनोखी चीज़ हो गई थी, लोगों ने शोर मचा दिया, ये क्या हो गया, धोना शुरू हो गया, वो नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल एक नॉर्मल प्रोसीजर है। अब देखिए हम न्यूजीलैंड की, जिस तरह आपने बताया, मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है, इधर एक बॉल देखें, ऑलमोस्ट यॉकर होकर ये बोल्ड हो गए थे क्रॉस शॉट पे। तकरीबन 6 लड़के जो पिछली दफा सीरीज में आए थे, उन्होंने काफी रन किए थे, वो नहीं खेले। मुझे सारों के नाम याद नहीं आ रहे हैं। विलियमसन था उसके अंदर, सेंटनर था। सेंटनर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर जो लेफ्ट आर्म स्पिन करता है, और ब्रेसवेल नहीं है, और कई और लड़के नाम मुझे इस वक्त नहीं है। फर्गूसन वो नहीं आ रहा। तो बाकी उनके मैंने लिस्ट बनाई हुई, जब कल से प्रोग्राम हमारी जियो पे शुरू हो जाएंगे तो उस पूरी लिस्ट मेरे पास है कि कौन आए थे कौन नहीं इस वक्त आए। तो ये चीजें चलती हैं। काफी बाहर थी गेंद, पहुंच गए उधर तक, 2 रन आराम से बन जाएंगे। इस तरह रन हो गए हैं 67, अब 3 रन रह गए। जी आई वुड एग्री विथ यू सिकंदर, क्योंकि वर्कलोड मैनेजमेंट जो है ये बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जब आपकी इतना ज़्यादा क्रिकेटिंग शेड्यूल जो है वो हैवी हो, और वर्ल्ड कप जो है 50 ओवर्स का वो भी अगर सर पर हो, तो मेरे ख्याल में ये आइडियल टाइम है नए प्लेयर्स को ट्राई करने का। और इस अगली गेंद पे एक ज़बरदस्त शॉट और डीप स्क्वायर लेग के ऊपर एक शानदार चौका, और उसके साथ ही मैच खत्म हो गया। एओ क्लिनिक ने इस मैच को 8 विकेटों से जीत लिया। मेरे ख्याल से ये छक्का हो गया है, हाँ 6 नजर आ रहा है, इसलिए कि उसको वो जो फेंस है, वो जो फेंस रोप कहलाती है, या इसका एक और भी नाम है टेक्निकल, आप देखें, वो उसके ऊपर जाकर लैंड किया, तो इट्स अ 6। जी बिल्कुल सही कहा आपने, राइट ऑन द बाउंड्री, फेंस के ऊपर, और ये छक्का, और स्कोर जो है वो 73, 2 खिलाड़ी आउट, और इसके साथ ही 8 विकेटों से ये मैच जीत लिया है एओ हॉस्पिटल है। बिल्कुल, ये थोड़ा सा मैच वन साइडेड हो गया। एओ क्लिनिक वर्सेस नेहा फैब्रिक्स, उन्होंने, और एओ क्लिनिक ने ये 8 विकेटों से ये मैच जीत लिया। 70 रन किए थे, और बड़े आराम से उन्होंने 2 विकेटों के नुकसान पे एओ क्लिनिक ने ये मैच जीता। और जैसे हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे अजहर हमीद साहब से, जो कि डायरेक्टर हैं इस टूर्नामेंट के, कि कुछ बच्चे एक्सपीरियंस हासिल करेंगे इधर से इस मैचेस में। तो यहाँ पे इसके बाद हम जब ये देखें, ये हाइलाइट्स हैं आज के मैच की। बहुत ही खूबसूरत शॉट ये खेला था, और ये पुल शॉट, इसकी टाइमिंग बड़ी ज़बरदस्त, और ये भी उठाकर उन्होंने बहुत ही ज़ोर से खेला, ये भी कवर के ऊपर से मारा। और अगर ये जो कैच थर्ड मैन पे हुआ, जो हमें लग रहा था कि स्लिप में जाना है, जो बहुत ही खूबसूरत कैच ये आखिरी लम्हों में, और ये आखिरी छक्का जो बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे गिरा, और इस तरह ये एओ क्लिनिक मैच 8 विकेटों से जीत गया। और इस वक्त हिना नीचे हैं, देखते हैं वो उनके साथ कौन से गेस्ट हैं। यस, आई हैव विद मी सुहेल खान, बैटर ऑफ एओ हॉस्पिटल। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस, आपकी टीम जीत गई है। क्या कहेंगे अपनी टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से? सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ जिन्होंने हमें फतह दी इंशाल्लाह। और बस हमने जो सोचा था, कप्तान ने जो प्लान दिया था, उसी पे सब उतरे और अल्लाह ने हमें जीत दी अल्हम्दुलिल्लाह। वेल, आपने 29 रन स्कोर किए, क्या प्लान लेके आज पिच पे आए थे? बस यही था कि जल्दी से जल्दी पूरा करेंगे, जितना जल्दी पूरा करेंगे हमारे लिए आगे के लिए फायदेमंद है। आप ओवरऑल 2 मैचेस जीत चुके हैं अब तक, सो व्हाट डू यू थिंक कि आगे की रेस में कहाँ तक जाएंगे आप लोग? इंशाल्लाह अल्लाह ने जहाँ तक लिखे हम अपना मेहनत करेंगे, बाकी अल्लाह के ऊपर इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। सुहेल खान हमारे साथ मौजूद हैं, अपने मैच जो जीत चुके हैं आज टीम, उस हवाले से बातें कर रहे थे। बैक टू द कमेंट्री बॉक्स। थैंक यू हिना हमारी जियो डिजिटल की बड़ी जबरदस्त किस्म की जो है वो रिपोर्टर हैं। ये कार्ड है आज बैटिंग का एओ क्लिनिक का। सुहेल ने 29 रन किए, जाकिर ने 9। दोनों प्लेयर जो बाकी अब नजर आ रहे हैं नॉट आउट रहे, एक ने 13, एक ने 5 रन स्कोर किए इस तरह। और कोई भी बॉलर इतना इम्प्रेसिव नजर नहीं आया। 1 विकेट दानियाल ने ली, 1 विकेट ली है फतेह ने, और उसके अलावा कोई भी कामयाब नहीं हो सका। और एक्स्ट्रास बहुत ज्यादा थे इस मैच के अंदर। अगर हम देखें
ये मैच समरी आपके सामने नेहा ने किए तो 69-70 का टारगेट दिया था एओक लेने के 2 विकेटों के नुकसान थे 73 रन बना के ये मैच बहुत आसानी के साथ ले लिया और हम यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे ब्रेक के बाद प्रेजेंटेशन होगी और उसके बाद हम दूसरे मैच के लिए आएंगे विल टेक अ ब्रेक Leading edge over the wicketkeeper's head. Has gone over the boundary ropes. Should be an easy chance. It is. Wrapped on the pads, big appeal and the finger goes up. And that has been taken. Flashed on the offside. Too short and easy to hit. That should clearly go out of the ground. Yes, it does. That's bad luck. He was caught at the short third man. Just having a little flirt outside off stump there. He's missed one or two, but he's got that one away down to third man. And he'll collect 3 for that shot. No, he won't. He's decided that 2 will do. Greg Campbell again. And that's through the gap. It wasn't a chance, and it's running down to the long boundary. Mark Taylor is the fieldsman. And so 3 more to Imran. That's a short ball, beautifully played by Imran. Well, he really got onto that one, and he's pulled that superbly. It didn't get much above chest high, and that's the way to play a pull shot. Now, those of you who want to know how to do it, have a look at this one and see if you can remember it. Back he goes, and whack, in front of square, down to the boundary. Playing this horizontal bat shot can get you thousands of runs if you played well. You've got to practice it. And that was an example of a lovely shot from Imran Khan. It's a pity he didn't use it on you. As Imran gets that through the gully. 3 for 2. It's going to the long boundary. Imran going quickly back to the third. It's a long throw, and he's coming back for the 4th. 50 for Imran Khan. Great knock by the Pakistan captain. Yes, that's a fantastic effort by Imran Khan in the circumstances. It requires a really top captain's effort here. And so far, so good for Imran. Beautifully placed. Straight through the middle between Dean Jones and Alan Border. Beautifully placed there by Imran Khan. He hasn't played a lot of attacking shots today. But when he's gone after one, he's obviously been very sure that he can put it away. I'll tell you what, he hasn't missed too many attempts to put away the half volley.
Drive, that's down the ground, that's knocked away by Campbell. They're going through to the single, that's 100 for Imran. Well played, a superb captain's knock. His first 100 against Australia. As opposed to allow him to do that, and while it wasn't a very good ball, it was a very straightforward pull shot down to the boundary for 4. That brings up the 250 for Pakistan, 5 wickets down. Got that one away and into the gap, all the way along the ground, and a little glance down towards Merv Hughes, who hasn't wasted much time with the glare on that occasion. And that's a very good shot from Imran. He's hit it through the gap, and the ball rolling away down to that very long boundary, and into the fence she goes. So yet another 4 to the Pakistanis. And the gap was left there to tempt the batsman, Imran, to hit down the ground, and that's exactly what he did. जियो सुपर पे रमजान क्रिकेट का भरपूर मजा, भरपूर एनर्जी के साथ भरपूर क्रिकेट, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट के सुपरस्टार्स सरफराज अहमद, खुशदिल शाह, शान मसूद, असद शफीक, हैदर अली, आजम खान, अनवर अली, उमर अकमल, फहीम अशरफ, साइम अयूब, मेपल लीफ एचडी पट्टी 8 कॉर्पोरेट T20 कप, पावर्ड बाय पार्क व्यू सिटी, 7 से 15 अप्रैल GH स्पोर्ट्स क्लब मोइन खान अकेडमी से बराह रास्त सेफ जियो सुपर पे जी। Welcome back once again to Moin Khan Cricket Academy DHS Sports Club, where AO Hospitals have registered their first win of the tournament and possibly qualified for the semi-final as well. Let's get on with the presentation ceremony. Presentation party में हमें join किया हुआ है Dr. Syed Junaid Ali Shah, who is a former Sports and Health Minister. Sir, congratulations and thank you so much for joining us here. साथ हमें join किया हुआ है Colonel Zakar Raja, who is the Secretary DHS Sports Club, Moin Khan Academy. Sir, thank you so much for your presence here. और हमारे साथ मौजूद है former Test cricketer सिकंदर बख्त. As always, sir, thank you so much for being here. AO Hospitals ने आज जबरदस्त कारकर्दगी पेश की, कन्विंसिंगली ये मैच अपने नाम किया, 8 विकेटों से जीतने में कामयाब हुए। सबसे पहले मैं दावत देना चाहूंगा लूजिंग टीम के कैप्टन अली मंजूर को कि आए और हमसे कुछ बातें करें। इट्स ओके अली, इट हैपेंस, यू विन सम, यू लूज सम एंड यू लर्न इन एवरी सिंगल मैच। सो अली, आज तीसरा मैच था आपका, कुछ चेंजेस आपने की थ्रू आउट द टूर्नामेंट, आपने कोशिश जरूर की, आई एम श्योर आपको बहुत सीखने का मौका मिला होगा अच्छे इंटरनेशनल प्लेयर्स के खिलाफ खेल के। बिल्कुल, थ्रू आउट ये इवेंट बड़ा अच्छा रहा और इस तरह के इवेंट होनी चाहिए। स्पेशली मैं मोइन भाई को क्रेडिट देता हूँ, DHA की पूरी मैनेजमेंट को क्रेडिट देता हूँ, कर्नल जका साहब हैं, उन्होंने इस तरह के इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया और ये अच्छा इवेंट है। स्पेशली यंगस्टर के लिए ये कैसा प्लेटफॉर्म है जिससे वो अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं। और स्पेशली वन ऑफ फ्यू वर्ड्स फॉर कर्नल जका साहब एंड मोइन भाई, फॉर मोइन भाई, ये इवेंट्स स्पेशली जिस मकसद के लिए इन्होंने ऑर्गेनाइज करवाया, कुछ प्लेयर्स ऐसे मिले हैं इनको, तो बाकी क्रिकेट है, पार्ट ऑफ गेम है, कोशिश की अपनी तरफ से 100% देने की, परसेंट देने की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बैटिंग क्लैप्स रहा थ्रू आउट पूरे टूर्नामेंट में। उस तरह का हम जो गेम प्लान हमारा था वो हम कर नहीं सके। चलिए मंजूर, इसी तरह मेहनत करते हैं, बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर एज वेल। I'd like to call upon Mr. Khalid Latif as well to come here and talk about his victory today. आज राह हमवार की है सेमीफाइनल की, लेकिन कल मोमेंट सीज का मैच है, उससे तयन होगा कि कौन सी टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करती है। बट खालिद, जबरदस्त परफॉर्मेंस आज आपकी टीम की, आप बहुत हैप्पी कैप्टन होंगे आज। बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे लास्ट मैच में जिस तरह हमारे परफॉर्मेंस थी, इस तरह आज हमने भी की है, तो कम बैक करना जरूरी होता है। हमारे पास भी यंग टीम है, यंग प्लेयर्स हैं, आपने आज देखा बेहतर उन्होंने एकदम से कम बैक किया है। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि जिसमें आपको 1-2 मैचेस चाहिए होते हैं सेटल होने के लिए। अब आपको ऐसा लग रहा है कि आप सेटल हो गए हैं और अगर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करते हैं तो और बेहतर खेल पेश करते हुए नजर आएंगे? इंशाल्लाह, बिल्कुल हमारा कॉम्बिनेशन अच्छा है, यंग टीम है, और जिस तरह अब जेल हुए टीम, तो इंशाल्लाह सेमीफाइनल क्वालिफाई मेरे ख्याल में तो मुझे बता दिया कि कर गए, लेकिन अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप क्लियर कर लीजिएगा, हमें बता दिए, सामने कोई भी टीम हो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इसी तरह क्रिकेट खेलें। बिल्कुल सूरत हाल, थैंक यू सो मच खालिद। सूरत हाल को जिस तरह है कि मोमेंट सीज ने कल एक और मैच खेलना है, उससे सही मानों में
तयन होगा कि कौन सी टीम उमर एसोसिएट्स का सामना करेगी सेमीफाइनल में. लेट्स मूव ऑन विद द प्रेजेंटेशन सेरेमनी एंड टॉक अबाउट द मैन ऑफ द मैच फॉर दिस मैच दैट AO Hospitals played. आज हन्नान अचकजई को AO Hospitals ने टीम में शामिल किया and he performed brilliantly, taking 3 wickets for his team, and he's the man of the match for this particular match. I would like to request Mr. Sikandar Bakht to hand over the player of the match memento. आ जाइए हन्नान अचकजई. हन्नान अचकजई ने 3 विकेट हासिल की. Mr. Sikandar Bakht will present the memento for the player of the match. साथ I'd like to request Colonel Zakar Raja, Secretary DHS Sports Club Moin Khan Academy, to hand over the cash reward of 15,000 rupees to Hannan Achakzai. Hannan Achakzai, आए हमसे कुछ बातें भी करें. हनान, आज आपको मैच में शामिल किया गया ताकि स्पिन अटैक को मजीद सॉलिडिफाई किया जा सके एंड यू रिस्पोंडेड. मजा आया आज आपको परफॉर्मेंस दिखाकर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अल्लाह पाक का शुक्र है कि परफॉर्म हुआ. तो माशाल्लाह बस रेगुलर क्रिकेट खेलते रहे. जहाँ पे जिस टाइम पे भी मौका मिलता है बॉलिंग में बैटिंग में तो इंशाल्लाह अवेल करने की कोशिश करते हैं. हनान अचकजई इसी तरह अपॉर्चुनिटीज को अवेल करते रहे. एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर जुनैद अली शाह फॉर गिविंग अपॉर्चुनिटीज टू सच यंगस्टर्स. थैंक यू सो मच हन्नान. I'd like to request thank you so much Hannan. I'd like to request Colonel Zakar Raja, Secretary DHS Sports Club Moin Khan Academy, who will present a club souvenir to Dr. Syed Junaid Ali Shah, former Sports and Health Minister, and to Sikandar Bakht as well, former Test cricketer. Right, ladies and gentlemen, this is about it from the presentation ceremony, but it's not over because we have another match to be played between Umar Associates and Barrington Crescent Group. We'll take a break here and we'll come back with live action. Leading edge over the wicketkeeper's head. Has gone over the boundary ropes. Should be an easy chance. It is. Wrapped on the pads, big appeal and the finger goes up. And that has been taken. Back on the offside. Too short and easy to hit. That should clearly go out of the ground. Yes, it does. That's bad luck. He was caught at the short third man. इन होठों की मस्ती तो समुद्रों को भी सैराब कर सकती है, फिर ये दूरी क्यों? मेरी आंखों के पैमानों में खो जाए, वहां सिर्फ आप ही आप है, बस आप. बंगाल को ये नामंजूर है. जियो सुपर पे रमजान क्रिकेट का भरपूर मजा, भरपूर एनर्जी के साथ भरपूर क्रिकेट, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट के सुपरस्टार्स सरफराज अहमद, खुशदिल शाह, शान मसूद, असद शफीक, हैदर अली, आजम खान,
Anwar Ali, Omar Akmal, Fahim Ashraf, Saim Ayyub, Maple Leaf SD Patti 8 Corporate T20 Cup, powered by Parkview City. 7 से 15 अप्रैल DH स्पोर्ट्स क्लब मोइन खान अकेडमी से बराह रास्त। सेफ जियो सुपर पे जीत के जियो। This man is incredible. Andrew Strauss looking to pad the ball away. Nasser Hussain's been making the point all through this test series that if you're going to pad Warne away, you have to make sure you get close to the ball and you have to make sure the ball hits the pad. Just look at this. Oh, this spin's big, massive. Middle stump, behind his legs. Andrew Strauss cannot believe it. Look out, England. Here comes Shane Warne. Shot has paid dividends for Australia, not for the man playing the shot, Kevin Peterson. Well, Warne wins the battle. Patience game. Kevin Peterson. Sweep shot. Sure whether he even hit that, but that's a great take from Adam Gilchrist. We're very happy. Getting a shot from the front on view. Here we go out of the rough, sweeping against it. Very interesting field placing on the offside. He has been given playing again at a ball pitching outside leg stump, which wasn't necessary. Well, there we go. Again, they're happy. Ian Bell didn't have to play that one, young fella, but he did. He chose to. And Shane Warne, it's going to be very hard for the England batsmen. They're playing at the ball every time. Here we go. It's going to pitch outside leg stump. He could have picked that away instead. Again, very, very good catch from Adam Gilchrist. Played that one. Matt Hayes is the man in the slip cordon. He doesn't drop many. A look back in anger by Ashley Giles. He's kicked the ball away so well, and he would look at this delivery and think, do I need to play it? He's opted to play it. The vicious spinner again. It's a low spinner. Matthew Hayden, very, very tidy in that slip position. And it's Warne again. Hard spun. Pitches outside. Yes, it does. Takes the outside edge. Matthew Hayden does the rest. Well, they're appealing to everything. First it was the LBW that I think he might have been given out caught. That's wicket number 598 for Shane Warne. You can see there Rudy Curson signalling that he has been given out caught. Well, this might be any which way. First ball, Steve Harmison. Warne again, the predator.
It's a legger. Where does it pitch? It pitches round about leg stump. It rattles into the pads. Does it take the outside edge? It's caught on the offside. I think that's a nick. 2-2. Shane Warne, 598. Career for him. There's the catch. Armisen, just one delivery. England 131 for 9. It's my ball. Well, that's pretty convincing. Takes Shane Warne onto 599 Test match wickets. He finishes with 6 for 46. Best bowling ever by an Australian on this ground. में श्रीलंका का दौरा है पाकिस्तान। नेशनल स्टेडियम कराची। पहला एक रोजा मैच। पाकिस्तान के कप्तान जावेद मियांदाद का टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला। श्रीलंकन टीम के मुकर्रर करदा 40 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर 171 रन। कप्तान बंदूला वारनापुरा 77 रन के साथ नुमाया स्कोरर। पाकिस्तान की जानिब से ताहिर नक्काश, इकबाल कासिम और जलालुद्दीन की एक विकेट। पाकिस्तान ने मतलूबा हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर 29.2 ओवर्स में हासिल कर लिया। मोहसिन हसन खान की 85 रन की शानदार इनिंग्स। श्रीलंका के रवि रत्नायके की 1 विकेट। पाकिस्तान ने ये मैच 8 विकेटों से जीत लिया। ये नेशनल स्टेडियम कराची में एक रोजा मैचों की तारीख में पाकिस्तान की पहली फतह थी। Good stroke. First bad ball for a while, and credit to JP Duminy for pouncing on it. Nicely played. Beautifully timed. And it's 4. Tommy gets through.